Okay, chalo. So, hello everyone. I'm Sudipta Panda, welcoming you all to Vedang Civil Services, powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you everyone? Samaste bhalare thibo. I think ସମସ୍ତଙ୍କର preparation ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିବ. The thing is, ଆଜିର class ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ important ହେବାକୁ ଯାଉଛି according to or as per the OCS Prelim examination, OCS Prelim ର perspective ରୁ. So important session कौन केमिति अछि ओडिशा हिस्ट्री उपरे स्टार्टिंग एंशिएंट पार्ट रो नेकी मॉडर्न एरा पर्यंत क्वेश्चंस आपनकर को टाइप रो फॉर्म हेकी पढुछि सेटा को हमें देखिबा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामना रे अगेन कहि रखुछि आपण मानकू जदि आपण माने चाहुचंदी फ्री रे एकदम आज्ञा हम आउ थरा आपण मानकू कहूछि टोटल फ्री रे आपण माने मॉक टेस्ट देई परिबे जहार ना रहउछि कि सहयोग आपण मानकू ही सहयोग करिवा लागि एई मॉक टेस्ट सीरीज नहीं कि आमे आसीछु आपण माने बाकू 10टा टेस्ट आपनकर रहउछि 10टा सेट रो टेस्ट आपनकर रहउछि जोडा कि आपण माने वेदांत क्लासेस रो एप्लीकेशन रे पाई परिबे पूरा एकदम एंड एकदम फ्री आपनकर रहइबो जस्ट आपण माने जानतु देखंतु एग्जाम देबा पूर्व थरे प्रैक्टिस करन बस एति की कहबी. नेक्स्ट चलंतु जिबा क्वेश्चन बाकी ता पूर्व आपण माने जानि छंती बैच आपण अधिकारी बैच ए सब अछि तो डिफरेंट अधिकारी बैच आपण माने नेबा लागि जॉइन करि परिबे and contact करि परिबे 8280532825 नंबर को so that आपण माने डिफरेंट बैचेस तार केति टेन्योर के को क्लास नउछि सेटा को जानि परिबे. वेरी वेरी गुड इवनिंग. आसो द फर्स्ट क्वेश्चन आपण माने के सामने रे जानछि क्वेश्चन टिके लंबा रहबो बिकॉज़ सबति को क्वेश्चन आपनकर स्टेटमेंट बेस्ड रहउछि. डोंट वरी मु टिके क्वेश्चन माने स्लाइड आगुरु टिके साइड हे जिवि सो दैट आपण माने आंसर देखि पारि कि कहि परिबे. तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि टिके भलो से पढंतु कौन कहिछि ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक फाइंडिंग्स एट कुलियाना. कुलियाना कहि देछि एठी आपण माने टिके को नोट डाउन करि दियंतु. कुलियाना कहूछि माने आपण माने को जगह को बुझि परिबे ना निहाती मयूरभंज बुझिबे. तो मते कोन जो कुलियाना फर्स्ट सेंटेंस कोन कहिछि आपण माने को तीनटा सेंटेंस दबा एटा होछि 1 and this one will be the 2 and this one is the 3 sentence. Okay, तो कोन कहिछि फर्स्ट सेंटेंस पढंतु ना कुलियाना located in the मयूरभंज district is recognized as a major archaeological और आमे कहि पार ताको Apulian culture site in Odisha. तो मते कोन एटा ना नाही आपण मान एते ही कहली जेते बेले कुलियाना ऊपर क्वेश्चन आसीबा आपण मान आखि कान बंद करी कि कोन कहबे ना एटा आपनकर मयूरभंज रे ही प्रेजेंट अछि. दैट मींस कुलियाना दैट इज प्रेजेंट इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द इंडिया रो मोस्ट सिग्निफिकेंट लोअर पैलियोलिथिक साइट मानक भितरु गोटिए जोटा कि एग्जिबिट करा जाईछि रिसेंटली माने आपनकर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज करा जाईछि एज ए Apulian stone tool site. ओके जोथरा आपनकर मिलिछि. आफ्टर दैट कोन कहछि ना ये आपनकर ट्रू हे गला. देन कहछि द साइट yielded a rich assembled of hand axes, cleavers and scrapers made primarily out of quartz and quartzite. Definitely एते ही आपण मानक कहली the handmade things that means आपनकर stone tools stone sculptures ओडा हाथ रे तयारी करा जाय. सो ये भी आपनकर राइट हे गला. The tools discovered at Kuliana demonstrate a complete absence of pebble tools indicating an exclusively advanced flake tool industry. मते कहंतु एटा भी आपनकर कोन ट्रू और फॉल्स मते कहंतु. कुलियाना एक्सकावेशन जेते बेले आपनकर हेला गोटे लेयर्स हेकी एक्सकावेशन हेइथिला. दैट मींस एक्चुअली दैट सो ए इवोल्यूशनरी मिक्स ऑफ टूल्स. दैट मींस आपनको पर्टिकुलरली गोटे टाइप रो टूल्स देखिबा को मिलिनी. एथरे डिस्प्ले करिथिला प्रिमिटिव कोर पेबल टूल्स अलोंग साइड द एडवांस फ्लेक टूल्स. एठी आपनकर पचाछि कोन एब्सेंस कथा पचारिछि बट एठी एब्सेंस नथिला बट ए सब जिंस हमें पाइथिले. दैट मींस ये आपनकर फॉल्स हे गला. सो 1 and 2 आपनकर एठी कोन स्टेटमेंट राइट हे गला. ऑप्शन ए 1A आपनकर हे गला डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन कहिछि आउ थरा पढंतु ना विथ रेफरेंस टू द प्रोटो हिस्टोरिक साइट ऑफ कोन ना गोलबाई शासन. गोलबाई शासन कहूछि माने आपण मान जानि पारुथिबे कोठी गोलबाई शासन बैंकॉक मंदाकिनी रिवर आल्सो नोन एज कोन ना मलागुनी रिवर बोली मंदाकिनी रिवर को कुहा जाए. को पाखरी आपनकर अछि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट पाखरे पडिबो दया रिवर पाखरे आपनकर ये पडिबो से सब कहिबी पास्ट आपण माने देखंतु कोन कहिछि राइट स्टेटमेंट हम पढिबा. इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द मंदाकिनी रिवर इन द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट. दैट्स ट्रू. देन एटा हला नंबर 1 हला ठीक है. नंबरिंग प्रॉब्लम थी जाइछि गाइस आपण माने टिके एडजस्ट करिवे. Number 2 कहछि the site provides a continuous cultural sequence from the Neolithic period through the Chalcolithic period at the Iron Age.
तो मते कहंतु एठी आयरन एज कथा कोथि पई आसिला जेते बेले हमें कहूचे स्टेटमेंट 2 को आपण माने देखंतु कोन पचारिछि ना व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट एबव गिवन आर करेक्ट करेक्ट कथा पचारिछि ठीक अछि तो स्टेटमेंट 1 जेते बेले आपण को कहूची ताको आपण माने रिलेट करंतु एठी आपण को सॉरी ऑप्शन 1 टाको आउथरे टिके भलो से देखंतु कहि इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द मंदाकिनी रिवर इन द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट एटा आपनकर लेफ्ट बैंक ऑफ द मंदाकिनी रिवर रे पडिबो कि नाही एटा आपण टिके निजे देखिबे हैना बिकॉज़ इट इज अ लोकल ब्रांच बिलोंगिंग टू द वाइड रिवर ऑफ कोन ना दया रिवर बेसिन जोटा कि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे मंदाकिनी रिवर जते बेले आपण को कहूची मंदाकिनी रिवर टाको हमें आउ कोन जानचे ना मालागुनी रिवर कहूचे मंदाकिनी रिवर ता आपनकर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट सहित किछि रिलेशन नाही सेथि पई ए ऑप्शन टाको मु एलिमिनेट करूची सेथि पई ए ऑप्शन टा आपनकर राइट हबो नाही ए ऑप्शन टा को मुठी एलिमिनेट करूची कि ये रॉन्ग ऑप्शन बोली जदी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कहूची ताले खोर्धा पाखे आपण माने कोन ना दया रिवर जेहेतु भुवनेश्वर करने जाईछि तेनु खोर्धा डिस्ट्रिक्ट सहित आपण माने दया रिवर को रिलेट करि पारिबे एटा आपनकर रॉन्ग हे जाउची देन कहूची द साइट्स प्रोवाइड्स ए कंटीन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम द नियोलिथिक रु चाल्कोलिथिक पर्यंत ताहाले मते कोन स्टेटमेंट 2 टा केते दूर ठीक हबो कारण ये कहूची इट स्टैंड्स एज अ बेसलाइन गोटे बेसलाइन साइट भलिया कोठू ना फॉर द ओडिशन प्रोटो हिस्ट्री ड्यू टू इट्स क्लियर अनब्रोकन आपनकर स्ट्रैटिफाइड और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हमें थ्रू पाउचे तो डेफिनेटली ये आपनकर ट्रू हबो देन कहछि इट हैज यील्डेड रिमार्केबल एविडेंस ऑफ ए सर्कुलर मॉड हॉट कहूची माने आपनकर कोन कहूची ना दैट मींस आपनकर कहूची सोशल डाटा इंक्लूड करूची कोनोसी हमें को प्रकार सब जिंस यूज करूथिले भात रांधुथिले तरकारी खाउथिले कोनोसी जिंस स्टोर करी रखुथिले सेतिर हमें किछि मॉड पॉट यूज करूथिले कि दैट मींस दैट वाज पॉलिश्ड वन पॉइंट्स आपनकर किछि थिला कि यस तो ए सब आपनकर थिला दैट मींस आपनकर एठी कोन 2 एंड 3 माने ऑप्शन बी हे गला राइट वन डी नहीं अल्ट्रोन ऑप्शन 2 हे जिवो राइट वन आंसर दियो पिले मौसमी तमे कोन कहउछ तमे आंसर दबोनी नेक्स्ट क्वेश्चन मते को कोन कहउची टफ आसीबो क्वेश्चन कारण आपण मान जानि संते ओसीएस लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो मते कोन रिगार्डिंग द नियोलिथिक चाल्कोलिथिक ट्रांजिशन इन एंशिएंट ओडिसा कंसीडर द स्टेटमेंट एंशिएंट ओडिसा को हमें कंसीडर करबा आपनकर कोटा हबा राइट आंसर कोन कोटा हबा आपनकर राइट आंसर फर्स्ट कोन कहउची द ग्राउंड स्टोन सेल्स दैट axes and chisels serve as diagnostic cultural markers of the Neolithic tool industry in the site कोठी ना कुचाई आपन को कहिची मते कोन एठी क्वेश्चन पचारची कोटा आपन को राइट पचारची तो जो कुचाई आपन कर कहिची एटा आपन कर राइट हबो रॉन्ग हबो मते कहि दियंतु फर्स्ट कहिला तो ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स लाइक कोन ना स्टोन टूल्स आपन कर डिफरेंट जेंति हमें कहूचे कुराडी टांगिया ए सब जिंस जेंति हमें कहूचे सेते बेले तार ना डिफरेंट थिला एज हैला सेल्स हैला दीस आर द वेपन्स और हमें कहि परिबा जोटा आपन कर थियरी फे फ्रॉम द सर्टेन थिंग्स रू तो नैरो चिसेल्स हमें कहिले कोन बुझुचे ना दीस आर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिकली फीचर्स दैट वाज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट माने यूज करूथिले नियोलिथिक साइट हैला जोटा आपन कर कुचाई रू एटा आपन कर फाइंडिंग्स हे सो राइट आपन तो ये हे गला नेक्स्ट कोन कहूची ना 2 रे कहिची द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हील मेड पोटरी particularly dull red ware and black and red ware marked the chalcolithic horizon at Golbai Sassan. Definitely a true. Second, the rice cultivation was entirely absent during the proto-historic phases of Odisha, with the economy relying strictly on the animal hunting. बिल्कुल नहीं proto-history जब आपन कहिला archaeological data according जदि हमें देखुचे not absent तीनिटा not absent अछि पिहु ओके सी कोन कहूची archaeological data जदि हमें देखुचे they were reveals that carbonized rice grain जोटा को हमें कहूचे कोन ओरियाजा sativa मन रखि थांतु जोटा को carbonized rice grains को जाउची they were actively cultivate करा जाउथिला during the proto historic period of Odisha तो डेफिनेटली ये आपनकर थिला किंतु एठी मन कोन करा जाउची ना ये नथिला बोली कोन जाउची these were absent बोली कोन जाउची तो डेफिनेटली आपनकर भूल हे गला तो राइट आंसर कोन हला ना 1 and 2 आपनकर हे गला राइट आंसर सो ऑप्शंस कोटा हे गला ना राइट आंसर आपनकर 1 and 2 ओनली हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जानि छी क्वेश्चन लेवल आपन माने को टिके टफ लागुथो सेथि लागि आपन माने व्यस्त हो जाउते बट क्वेश्चन को जदी पढी देबे बुझि जिवे हैला आसन होइची consider the following कोन consider the following statements about the prehistoric rock at sites of western odisha ra prehistoric rock cut sites को हमें फाउंड आउट करिवा फर्स्ट कोन कहिची ना this is the 1 this is 2 this is 3 okay
फास्ट कहिची साइट्स लाइक विक्रम खोल देखो वेस्टर्न ओडिशा कहूची माने आपण माने जानछंती विक्रम खोल सहित रिलेट करै दोचंती विक्रम खोल आपणकर कोन रिलेट करूची फीचर्स ऑफ द झारसुगुडा ता सहित आपण माने जानिछंती मासिव नेचुरल रॉक शेल्टर आपणकर प्रेजेंट रहूची these are the paintings तो ये आपणकर राइट हे गला ना सुन सुन आपण माने राइट कर दोसंती वेस्टर्न ओडिशा सहित then कहची the rock art inscriptions at Vikram Khol have been conclusively deciphered as the earliest structural variant of the Brahmi script मते को Brahmi script सहित एकर किछि रिलेशन अछि कि this is a undeciphered system of prehistoric graphic केते बेले आपनकर कोन ना कोनोसी भी structural variant of Brahmi script फॉर्म नै नथिला Brahmi script आपनकर केते बेले आसिला Mauryan period रे तापरे चेदी डायनेस्टी खारबेलंक पीरियड आपनकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज सब परे हैला जेते बेले आपण मानकु हैंड राइटिंग कोन लेटर्स कोन जाननथले सिंगल स्क्रिप्ट कोन बा लोक जानिबे ता माने जेते बेले आपनकर कोनोसी स्टोन क्रेविंग्स थिला स्टोन आपनकर कोन कांथरे बाडरे चित्र करिकि लोक मानकु कोनोसी जिंस माने इंस्ट्रक्शन करा जाउतला सेते बेले आपनकर कोनोसी स्क्रिप्ट मेंशन नथिला दैट्स व्हाई इटा आपनकर रॉन्ग हिगला देन कहला योगी मठ इन नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट is another vital rock art site displaying definitely to हे गला योगी मठ आपण मान जानि संदि नुआपड़ा सहित सो ऑप्शन 1 and 3 कोठी अछि ऑप्शन बी हे गला 1 and 3 only नेक्स्ट चलो मते को कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक प्रोटोहिस्टोरिक साइट्स एंड then consider then corresponding districts okay तो साइट उडा को आमे कोनोसे डिस्ट्रिक्ट सहित कनेक्ट करके देखिबा तो कोटा काहा सहित ठीक अछि देन कहिछि कुचाई कुचाई आपण मानकर मयूरभंज खिजिंग हैला आपणकर मयूरभंज कुचाई हैला आपणकर मयूरभंज यासत आपण माने रिलेट करिवे देन कहिछि शंकरजंग अनुगुल अनुगुल ले शंकरजंग ना आपण माने सुनि चंती कि केते बेले कोंदु मते राइट और रॉन्ग जल्दी शंकरजंग और आपको आपण मानकर कोन शंकरजंग ही कहते ये भी आपणकर कोन अनुगुल ले ही प्रेजेंट अछि बट क्वेश्चन ने पचारिबो जदी गोलबाई शासन पुरी एबे मु तम माने कोन कहितली गोलबाई शासन कहिले आपण माने कोठी रिलेट करिवे ना ऑब्वियसली खोर्धा डिस्ट्रिक्ट साथ रिलेट करिवे गोलबाई शासन फिजिकली सिचुएटेड एट द inside of the administrative territory of the Khordha district not at the coastal district of Puri so ये eliminate हे गला परे 1 and 2 आपणकर 1 and 2 only option B again oh option B yes yes next question चलो मते को कोन कहिछि ना रिगार्डिंग द स्पेसिफिक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एट कोन ना पुनी कहला शंकरजंग हां अनुगुल ना consider the following statements first कहिछि एटा हला 1 this one 2 this one 3 okay मते कहिछि शंकरजंग is recognized as the earliest chalcolithic iron age burial ground excavated in the lower Mahanadi valley ताहाले मते कुह ए जो शंकरजंग आपण मानकु अनुगुल डिस्ट्रिक्ट कहिली this is widely recognized by the historians as the earliest chalcolithic to iron age पर्यंत आपण माने रिलेट करि परिबे but this is a lower Mahanadi river valley zone also so right हे गला कोन महानदी सहित भी आमे तक कनेक्ट करि परिबा कारण लोयर रीजन रे हैला नेक्स्ट कहछि द साइट इज यूनिकली फेमस फॉर यील्डिंग ग्राउंड स्टोन रेगुलर सेल्स alongside distinct of metallic copper socketed axis तो या सहित आमे रिलेट करि परिबा कि टेल मी यस और नो this site did not yield any kind of metallic copper socketed axis but its metal findings were limited to the very small copper ornaments हमें करि परिबा अली आपनकर जेते आर्कियोलॉजिस्ट माने फाइंडिंग्स बाहर करिसंती रिसर्च करिसंती they have been found that iron objects alongside its diagnose करिसंती lithic tools मानकु so all the metallic coppers are not but right option 3 देखि दियो ना human skeletal remains at Sankarjang were found buried along with the diagnostic lithic musical instruments known as the stone bars or the lithophones then eta apanakar kono na true he gala तो ऑप्शन 3 एटे राइट हे गला 1 and 3 ऑप्शन सी इज द राइट वन ऑप्शन सी दुईटा ब्रोंजेंस की ना दुईटा जाक ब्रोंजेंस नो गोटे आपनकर चाल्कोलिथिक गोटे लियोलिथिक डबल डबल रही सॉरी सिंगल रहिबो नेक्स्ट माने को ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द कलिंग वार कॉजेस आपनकर जियोपॉलिटिकल वार कोन हेइथिबो कॉजेस आपनकर जियोपॉलिटिकल वार कोन हेइथिबो मते को
हाँ रोशन दोस्त अरे 1 2 3 नंबर टा केमती कोन कटि जाइछि मु देइथिली सेटा कटि जाइछि गोटे मिनिट रुको उफ 1 2 3 नंबर देई नाहंती कटि जाइछि और कोन करबा हो देखो आंसर देखो ओके कौन कहला देखो 261 BC रे कलिंग वार हेतला फर्स्ट कहला कलिंग कमांडेड स्ट्रेटेजिक ओवरलैंड and the maritime trade routes connecting the Magadha with southern India and southeast Asia तो डेफिनेटली जेतेबेले ओडिसा गोटे मगध हैला या फिर आपनकर मौर्यन एम्पायर हैला अफगान हैला जो माने भी आपण शासन करिसथि से माने देखिले कि ओडिसा पाखरे बहुत सारा स्टोर हेकि अछि मिनरल्स जोटा कि आमे माने जदि शासन करू ताहाले वी कैन बी फ्रूटफुल तो ऑब्वियसली एटा है राइट आंसर देन कहछि द इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस ऑफ कलिंग posed a direct economic and military security threat to the first Mauryan threat कौन से प्रकार आपनकर कोन मौर्यन एम्पायर थ्रेट देइथिबो ह निहाती देइथिबो देइ नथिबो कोन देइथिबो राइट ये देइथिबो then कहछि Megasthenes Indica explicitly states that the Kalinga state maintained a powerful standing army that rivaled the military numbers of Chandragupta Maurya that is not true so right answer 1 and 2 कोथि पई 3 नंबर सेंटेंस आपनकर राइट हबनी कोथि पई हबनी because we know Megasthenes Indica रे मेंशन करिसंती documented about the general internal Indian military classification हेतिला during the Chandragupta Maurya's era but that he had not make any sense to the explicit comparison claiming to the Kalinga's army with the कोन ना मगध सहित कोनोसी प्रकार कंपैरिजन करी कि आपनकर इंडिका बुक रे मेंशन करी नाहाती नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहिछि ना with reference to the consequences and the transformation of Ashoka after the Kalinga war consider the statement को हम जदी कंसीडर करू छे ताहा हैला तीनटा भूल अछि हां तीनटा भूल ही अछि ओके एबे देखो नेक्स्ट सेंटेंस कौन कहूछि now with reference to the consequences of the transformation of Ashoka तो ये रहला आपनकर 1 ये रहला आपनकर 2 ये रहला आपनकर 3 ओके तो Ashoka completely abandoned the policy of कोन ना भेरी घोषा जोटा को मिलिटरी कनक्वेस्ट हुआ जाए and permanently substituted it with धर्म घोषा religious conquest right हबो और wrong हबो मते right or wrong जल्दी को कोडा हबो कोडा हबो obviously आपनकर statement 1 right हिजिबो extensively bloodshed of the Kalinga was promoted to Ashoka to formally renounce कोन ना आपनकर धर्माशोक रे कन्वर्ट हे जायथिले conquest हेबा लागि by force so definitely this one is true then कहिछि he formally कोन converted to Buddhism under the spiritual guidance of kahar ना उपगुप्त ए क्वेश्चन आपनकर सब बेले क्वेश्चन ने आसे कि who is the spiritual guru of Chandragupta sorry Ashoka then मन रखंतु उपगुप्त तो ये ट्रू हे गला तापर कला इमीडिएटली following the war Ashoka completely disbanded the Mauryan standing army and dissolved the provincial administrative setups in the Kalinga ना एंती किछि करि नांती उल्टी हमें कहि परिबा कि Ashoka after or Ashoka maintained kale his vast standing imperial army to guard the frontiers and actively restructured Kalinga into highly organized Mauryan administrative province को माने सडन आपण माने कहउछनी कि चंडाशोक रु धर्माशोक रे कन्वर्ट हे गले देन तांकर कोन टोटल मिलिटरी को से माने पुनी पठै देले वापस पठै देले सेंती किछि कर नथिले से उल्टी कलिंगर सुरक्षा पई लोक माननकु गोटे भलो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करबा लागि भलो गार्डशिप प्रोवाइड करबा लागि तांकर मिलिटरी आर्मी को सेठी अपॉइंट करि दैथिले ओके so that will be the right answer so it हे गला 1 and 2 again option A
नेक्स्ट देखो कौन अच्छी मत को रिगार्डिंग द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट located in Odisha consider the following statements कोठी कोठी आपनकर कोन अछि एंड सेंटेंस कोन कहूची टिके चलंतु देखिबा ओके कोन कहिछि ना फर्स्ट कहला the twin Ashokan rock edict in Odisha are physically located at Dhauli and Jawgada मते कुह is that true धौली एंड जौगड़ रे आपनकर प्रेजेंट अछि ना नाही देयर आर टू साइड्स जोटा कि जे पर्यंत लांगुडी हिल आपनकर जाजपुर डिस्कवर हेई नथिला देयर वेयर टू साइड्स मेजर साइड्स तो दीटा ही आपनकर जोटा कि रहउची धौली एंड आपनकर कोन ना जौगड़ धौली इज द प्रेजेंट इन द खोर्धा भुवनेश्वर whereas जौगड़ इज इन द गंजाम तो हमें जानि छे दे होस्ट अशोकस मेजर रॉक एडिट्स विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ ओडिशा आर लोकेटेड धौली एंड जौगड़ सो राइट आंसर ये हे गला then कहिछि मेजर रॉक एडिक्ट 13 which graphically details the horrors casualties and the remorse of the Kalinga war is proudly inscribed at the both Dhauli and Jawgada एठी कहला both Dhauli and Jawgada ये आपनकर हबो की वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम आसो तो कुआ मते कोन हबो राइट आंसर तो ये आपनकर नाही 13th रॉक एडिक्ट ओनली अछि कोठी धौली थी जौगड़ थी आपन ताकू पाइबे नाही सो ये डेफिनेटली आपनकर कोन भूल हे गला और नहीं मते कुआ ये ओनली धौली थी अछि तो नेक्स्ट कहिछि इन प्लेस ऑफ एडिक्ट 11 12 and 13 Ashoka substituted two special calling edict dealing explicitly with the local administrative policies एटा राइट हबो ना नहीं मते कुआ ये हबो राइट काहे की अशोको स्पेसिफिकली कोन करथिले जानिचो ना एक्सक्लूड करिथिले standard of edicts like 11th 12th or 13 both 11 12 and 13 at the sites apanଙ୍କର substituted within two localized special calling edicts रे apanଙ୍କର मेंशन करा जायतिला तो तीनटा बदल रे आपनकर गोटिए 13 रॉक एडिट कर देथिले बाकी दीटा जाकर जहां भी कंटेंट सेटा को 13th रॉक एडिट रे कोन ना ऐड ऑन करि देथिले सो ये हे गला आपनकर राइट 1 and 3 हे गला ऑप्शन है कि हां 1 and 3 ऑप्शन बी हे गला राइट आंसर मैम 15 अच्छी एग्जाम हाँ कथा है से विषय आस मते को नेक्स्ट कोन कहिछि ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल कॉलिंग एडिक्ट्स ऑफ अशोक कोन अछि स्पेशल सेंटेंस देखो ना फर्स्ट कोन कहिछि 1 this one is 2 this one is 3 कहिला दे आर एड्रेस्ड स्पेसिफिकली टू द महामात्रस जोटा को मैजिस्ट्रेट्स को हजांती ठीक अछि and the kumaras जो माने को प्रोविंशियल प्रिंस को जाय stationed at the regional headquarters of the Tusali of Samaka मन रखो तुसाली हैला या फिर समका हैला ए रीजन माने करे मैजिस्ट्रेट्स को महामात्रस को जाउतला whereas the provincial prince माने को कुमार बोली को जाउतला एटा आपण माने कर ट्रू आपण माने जानि छथि नेक्स्ट आपण को पचारिबो इन these edicts Ashoka proclaims his paternal political philosophy through the famous declaration कोन ना all men are my child तो all men are my child ए सब कोन अशोक लिखि जंदी तांकर रॉक एडिक्ट्स रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक एडिक्ट्स रे तो ये भी ट्रू देन कहिछि द स्पेशल एडिक्ट्स एक्सप्लिसिटली ले डाउन judicial guidelines to prevent the arbitrary imprisonment to torture of local frontier subjects exactly जते बेले आपनकर धर्मासोकु सॉरी चंडासोकुरु धर्मासोकु अशोक कन्वर्ट हेले जते बेले चंडासोकु से थिले ता माने से जदी एतिकी क्रूर थिले तांकर सैन्य माने भी तो सेतिकी क्रूर थिले तो सेमान को समस्त को सिए गाइड गोटे गाइडलाइन भीतर रखिथिले आपन को कोन माने बुद्धिजीम एक्सेप्ट करौथिले एंड तांको चेंज करौथिले एंड तांकर माइंडसेट चेंज करिकि टोटल ओडिसा रो बॉर्डर रे सेमान को कोन नियुक्ति दे देउथिले सो ये भी आपनकर राइट हे गला सो 1 2 एंड 3 ऑप्शन डी हे गला ठी राइट वन सब ठीक ही लागु सब ठीक ही अछि आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को ऑल ही पी ये समस्त टिके जदी पार्टिसिपेट करिवा आंसर देबारे ताले भल लागिबो क्लास हैला मते को with reference to the administrative capital of Mauryan Kalinga पुनी आसा Mauryan Kalinga कर administrative capital कोन अछि टिके देखिबा कोन कहिछि ना कहिछि administrative capital of Mauryan Kalinga ऊपर क्वेश्चन कोन अछि ना फर्स्ट कहिला this one is 1 this one is 2 sorry this one is 2 then this one is 3 okay कोन कहिछि देखो ना Tosali was designated
as the principal seat of the Mauryan province's government in the northern Kalinga, historically identified with the Sisupalgarh Dhauli. Definitely, I am janiche Tosari was the northern province seat of the Mauryan rule, and its physical remains as the linked with the fortified area of Sisupalgarh and Dhauli. So, ye true. Then kon kahichi na Samapa kahi dechi. Samapa functioned as a secondary administration. Eiti previous question apan mane jodi jibe bari kon kahila na headquarter at Tosari and Samapa jodi eita true heichi ta mane apanकर बुद्धिज्म ता माने आपनकर कलिंग पीरियड रे अशोकंग पीरियड रे आपनकर समपा भी कोन रूल करिछि ता माने ये भी ट्रू हे गला समपा फंक्शन एज द सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आफ्टर द तोसाली देन कहिछि बोथ तोसाली एंड समपा वेयर unfortified open settlements designed to foster direct communal harmony with the forest tribe तो एटा आपनकर कोन ट्रू हबो कि no because both had the capitals were heavily fortified settlements ताको पाखे कैपिटल गोटे देशर गोटे राज्यर गोटे जेकोनोसी जगार कैपिटल माने हेड क्वार्टर जते हमें कहूचे ता माने कोन से जगार सब जिंस अवेलेबल थिबा दरकार सेठी लागि से कैपिटल भाबली सर्व करे जदि हमें कहूचे तोसाली हेला समपा हेला आपनकर कैपिटल अछि दैट मींस दैट इज द फोर्टिफाइड सिटी माने सेतिरे जेकोनोसी अवेलेबिलिटीज जेकोनोसी फैसिलिटीज रहिबा कथा सब जिंस अवेलेबल थिबो सो याको हमें केमिति कहि परिबा कि दिस वाज अनफोर्टिफाइड तो हबनी तो ये हे गला रॉन्ग सो 1 and 2 हे गला कोन राइट तो ए अकॉर्डिंग आपण मानकु कोन ना क्वेश्चन को रिलेट करी करी ऑप्शन उडा को आंसर देबा को पड़िबो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखिले पिला माने टिके छानिया हे जादी कि एते लंबा लंबा क्वेश्चन किंतु जदि थरे पढी दबो क्वेश्चन एते इजी लागिबो बहुत इजी लागिबो तमान हैला नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो मते कमेंट Sorry guys. Asa, who mate consider the following statements about the structural act accompanying the Ashokan edicts are Dhauli. Dhauli re Ashokan edict को आसो टिके accompanying करिबा कोन कहूची फर्स्ट हैला ये सेकंड हैला ये थर्ड हैला आपनकर ये ओके फर्स्ट कोन कहूची ना the rock cut elephant carved out of a monolithic आपनकर boulder at Dhauli sits directly above the inscribed Ashokan edicts. Is that true? आपण को मोनोलिथिक कथा कहू आपण को नेचुरलिस्टिक कथा कहू द नेचुरलिस्टिक एलिफेंट कथा कहू ओके तो एवरीथिंग गाइस आपण कर कोन दीस वेयर द स्कल्पचर इज कार्व्ड डायरेक्टली आउट ऑफ ए सिंगल मोनोलिथिक रॉक बेंच आपण कर कोन लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्टोन एडिक्ट ऑफ द कोन ना पैनल्स तो ये आपण कर राइट हे गला नेक्स्ट सेंटेंस कोन कहूची ठीक है केयरफुली देखो now the Dhauli elephant is, represents one of the earliest known specimens of the structural plastic art and the Mauryan animal sculpture in India मते को plastic art animal sculpture या विषय रे आपनकर कोन ये डिनोट करूची याकु ये कोन प्रूफ दोउची कि हां ना नाही मते को जल्दी दोउची कि नाही देखो एलिफेंट स्कल्पचर हैला माने रिप्रेजेंट करूसंती इंडिया रा अर्लीएस्ट नोन एग्जांपल फॉर्मल रॉक कट प्लास्टिक एंड मौर्यन एनिमल डिजाइन जदि आपण माने भाबंतु आगो को जाई कि आपनकर प्लास्टिक मींस आपनकर एई वाला प्लास्टिक नै प्लास्टिक माने आपनकर सॉलिड एग्जांपल को प्लास्टिक कहै छै ओके तो ये आपनकर राइट हे गला नंबर 3 कोन कहै छै देखो ना अनलाइक जय जगन्नाथ ओके देखो कोन कहै छै अनलाइक द अशोकन पिलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया the Dhauli elephant kon kahila na Dhauli elephant features a highly polished mirror like glossy finish typical of Mauryan court art eta kon ठीक हबो कि नॉर्दर्न अशोक कथा पचारिछि नॉर्दर्न इंडिया कथा पचारिछि अशोकंकर नॉर्थ इंडिया कथा पचारिछि दैट मींस द पिलर्स मेड अप ऑफ ना सैंडस्टोन ने तयारी चूनर सैंडस्टोन से तयारी Dhauli elephant was carved out from the local stone हना नहीं मते को धौली रे हेछि माने थोड़ी ना आपनकर महाराष्ट्र की गुजरात रे इंपोर्ट हेछि बसे निजा हेइ नथो निजरा हमर ओन कलिंग रे जो प्रेजेंट अछि स्टोन सेइथिरे आपनकर तयारी हेथे
लोकल स्टोन एंड लाख देकी ताको जॉइंट करके कोन गोटे मिरर लाइक पूरा घसी 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 पॉलिश्ड वाला टेक्सचर आनिथिले किंतु जदि आमे बाहर कोनोसी जगह रे देखिबा आउट ऑफ ओडिसा देखिबा ताहले नॉर्दर्न साइड देखिबा ताहले आपनकर चूना पत्थर रे से तयारी हिता चूनर सैंडस्टोन तो ये आपनकर एलिमिनेट हे गला तो 1 and 2 हे गला राइट कोन 1 and 2 is right one next कोन कहछि देखो ना which of the following statements is are correct regarding the script and language utilized in the Ashokan edicts at Dhauli and Chaupada okay fine let's have a look here कोन कहछि देखो this is number 1 number 2 are asked yes number 3 okay कहछि the texts are incised okay कोन कहछि ना the texts are incised uniformly in the Prakrit language using the Brahmi script definitely आपण मानकु जेते बेले अशोकंग कथा कहिबो मु आपन कहिछि अशोकंग कथा कहू खारबेलंग कथा कहू आपण मान जिवे कोन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को प्राकृत लैंग्वेज को तो डेफिनेटली ये आपनकर कोन ना ट्रू हे गला के रहो ट्रू हे गला देन कहछि द डायलेक्ट यूज सो स्ट्रांग लिंग्विस्टिक ट्रेट्स ऑफ द मगध प्राकृत कैरेक्टराइज्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग लॉ फॉर लॉ फॉर रा आपनकर एटा सब्स्टिट्यूट करा जाय कि मते को भाबी कि द टेक्स्ट आपनकर जो मगध प्राकृत डायलेक्ट रे प्राकृत को टाइप रो थिला ना मगधी प्राकृत रे लिखा होथिला एंड ये कैरेक्टरिस्टिकली सब्स्टिट्यूट करे कहा को द लेटर ला इन द प्लेस ऑफ र मन रखंतु जो जो जगह रे आपनकर ओडिया रे ओडिसा रो र यूज होथिला सेही जगह रे सब लॉ यूज करा गला तो ये आपनकर राइट दिस इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस मन रखंतु after that a separate Greek and Aramaic translation of the special Kalinga edicts was also discovered along the periphery of Jaugada. Is that true? Mate kuha. No Greek or any Aramaic translations exist in Odisha. Odisha re only bilingual Ashokan edicts are restricted or northern western founders like आपनकर कोन डिफरेंट जो नॉर्दर्न एरिया अछि से मानकर चला जाउतला किंतु आउट ऑफ इंडिया कोन से एडिक्ट आपनकर एठी चालू नथिला सो 1 and 2 हे गला राइट हां कंडाहार आपनकर डिस्कवर हेतिला एग्जैक्टली एटा आपनकर कोन ना कंडाहार डिस्कवर कंडा ओके चलो नेक्स्ट मते को स्टेटमेंट असर्शन टाइप क्वेश्चन करिचा गुरु केबे स्टेटमेंट असर्शन आसले केमति हैंडल करिवो आशा देखो जदि स्टेटमेंट एंड असर्शन वाला क्वेश्चन आसिला ताहाले हाउ यू गाइस विल फेस इन द एग्जामिनेशन तो कोन कहिछि देखो ना फर्स्ट स्टेटमेंट कहिछि अशोक ओमिटेड मेजर रॉक एडिक्ट 13 फ्रॉम हिज रॉक इंस्क्रिप्शन कार्व्ड आउट टू धौली एंड चौगड़ तार रीजन ना कोन दैछि ना अशोक वांटेड टू अवॉइड आपनकर psychological distress and context heavy reminders of past massacres among the newly conquered people of Kalinga तो मते कहिलो कोउटा आपनकर राइट हबो को मते कोउटा आपनकर राइट हबो माने बोथ आपनकर स्टेटमेंट एंड असर्शन जदि माने असर्शन एंड रीजन जदि हमें देखुचे ताहले दीटा जाक ट्रू हबो और कोउटा फॉल्स हबो को जल्दी both correct explain yes the both assertion and reason true and correctly explain करूची A को माने both reason explain करूची assertion को correctly that means आपण एठी both A and R are true and R is the correct explanation of A option A is right हिजो कारण आमे जानि छे अशोक purposely omit करिथिले major rock edict 13 को from his कोदरो ना public rock panels काहेकि आमे धौली रु आने जौगड़ रु ताकू रिप्लेस करैथिले कोथि पई करैथिले रीजंस कोन थिला ना से चाहू नथिले कलिंगर कोनोसी लोक सेटाकू देखु आन ताकू सेही भयावह मुहूर्त सेही 261 बीसी रो कलिंग युद्ध पुणी थरे मने पडु बोल जेते नुवा जनरेशन आसुचंदी से माने चाहू तांको मनरु सेटा कोन लिभि जाऊ बोली सो सेइरा थिला तांकर मेन तो हे गला राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को तो राइट हे गला हां मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द कोन महामेघ वाहन डायनेस्टी अरे 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 आसिला महामेघ वाहन डायनेस्टी को पळेले केते हमें सेही अशोकंग विषय रे पढिबा एबे आस आउट के आगु जिबा महामेघ वाहन डायनेस्टी जहा को हमें कोन जानले ना चेदी डायनेस्टी खारबेलंकर डायनेस्टी हैला यार आंसर टिके देला पढिला स्टेटमेंट 1 2 कोन कहउछ राइट आंसर 1 2 3 चलो पढो
देखो कौन कहि स्टेटमेंट पढ़ दिस वन इज द फर्स्ट जानू छ तो एटा होची सेकंड अबे चले एटा होची थर्ड फर्स्ट कौन कहला देखो ना द डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स इंडिपेंडेंट सोवरेन authority in following the fragmentation and decline of the Mauryan Empire एटा आपनकर ठीक हबो ना नाही मते कोन डेफिनेटली ठीक हम कहीं बिकॉज वी नो दैट दिस डायनेस्टी माने खारबेला डायनेस्टी आपनकर महामेघ वाहन डायनेस्टी आपनकर चेदी क्लान ओके इट्स सॉवरेन रूल इन द कलिंग ड्यूरिंग द पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन कहार ना आफ्टर मॉडर्न एम्पायर जेतेबेले डिमिनिश्ड हे जेतेबे डिक्रीज हे जाई ता परे परे ही आपनकर आरंभ हो जाई छि चेदी डायनेस्टी चेदी क्लान सो स्टेटमेंट 1 राइट let's have a look in the next sentence the Puranic genealogies link in the lineage of the Mahamegha Pahana directly to the historical Chedi clan definitely कहली भी Chedi dynasty तो ये true है गला Kalinga Kharavela was the literal founder Kalinga Kharavela famous ruler of the Chedi dynasty or the Mahamegha Pahana dynasty but King Mahamegha Bahananko according to the dynasty na hechi Mahamegha Bahana dynasty hela the King Kharavela was not the founder so 1 and 2 again 1 and 2 Kharavela third ruler thile exactly true Kharavela was the third ruler next mate ko with reference to the structural layout of the Hathigumpha inscription consider the following statements asa padhiba kahichi 1 कहला आपनकर 2 देन कहला आपनकर कोन ना 3 ओके कोन कहला इट इज अ मल्टी लाइन undated inscription incised on the overhanging brow of the natural Hathigumpha cavern in the Udayagiri hill मते को ये ठीक ना नहीं फास्टिंग ता आपण माने जानि संती the inscription is a multi line historical केतेडा ना 17 lines I think आपनकर ना हां 70 lines आपनकर exactly थाए that recorded inside the natural rock like Udayagiri रे कि हेला true then आपनकर कोन कहि देखो कहला the inscription is written in the Sanskrit language बिल्कुल नहीं आपण मान को कोन कहि जेते बेले language कहिला आपनकर प्राकृत language कहिबो so definitely this will be the wrong one then कोन कहि it records the autobiographical achievements of the King Kharavela yes King Kharavela and तांको 13 वर्षर साम्राज्य विषय रे डिटेल ले लेखा जाई छि कोथिरे आपनकर ना Hathigumpha inscription true हे गला next question देखो कौन कहि ना regarding the specific military campaigns of Kharavela recorded in the Hathigumpha inscription consider these statements as a पढ़ा consider कौन करूछि ना कहिला see first कौन कहि this one is the 1 this one 1 and 2 and 3 okay कहला in his second regnal year Kharavela dispatched a powerful cavalry and infantry force westward defying the authority of the Satavahan king Satkarni Gautami putra Satkarni माने पडुछि second year रे ही से Kharavela कोन पठैथिले तांकर गोटे massive army westward to challenge the borders of the Satavahan king Satkarni प्रथमंकु तो ये तो राइट है ही गला तो ये तो राइट है ही गला then कहि he marched north toward Magadha forcing the retreat of the Yavana Indo-Greek king कोन Demetrius of the कोन गोधगिरी एटा भी ठीक ना नहीं ये भी ठीक से मार्च करिथिले आपनकर नेक्स्ट कहि in his 12th regnal year he invaded Magadha exactly 12th regnal year रे से कोन मगध रूलर आपनकर के थिले ना बृहस्पति मित्र आपनकर थिले के थिले माने पछी के थिले Brihaspati Mitra was the ruler. Okay. The Brihaspati Mitra and retrieved the sacred Kalinga Jina. Kalinga Jina कर ideal प्रतिमूर्ति Kharavela वापस आनी थिले ना कलिंग को तो कहाठु आनी थिले बृहस्पति मित्र कोठिकार राजा थिले मगधर किंग थिले सो मन रखंतु कलिंग जीना Is that clear? So it is the 1, 2, 3 option D है गला right one है ना yes next question चलो next मते को कौन कहूची now consider the following statements regarding the developmental public works executed by Kharavela okay first कौन कहूची देखो
ओके सॉरी कौन कहला ना consider the following in his past regnal year he spent massive wealth repairing the storm damaged gates आपणकर ramparts and structural towers of his capital city आपणकर कोन फास्ट ईयर रे आपणकर कोन करिथिबे ना फास्ट ईयर रे डेफिनेटली जहां भी सब मरामती काम थिबो ताको कंप्लीट करि देथिबे स्टॉर्म डैमेज हो साइक्लोन हो फ्लड हो जहां भी हो ये तो ट्रू नेक्स्ट कोन करचंदी इन हिज फिफ्थ रेग्नल ईयर ही एक्सटेंडेड a historic canal aqueduct originally excavated 300 years prior by the Nanda King माने नंद किंग जेतेबेले आपणकर किए थिले महापद्म नंद आपणकर इरिगेशन केनाल सिस्टम ओडिसा रे करैथिले आगुरु माने कलिंग रे करैथिले बट जेतेबेले आपणकर खारबेल आसिले ताहाले से सेटा कोन मरामती कले ताहाले एटा भी आपणकर ट्रू हे गला देन थर्ड नंबरटा पढिबा ना टू कमेमोरेट हिज स्वीपिंग मिलिटरी विक्टरीज he built the grand महाविजय प्रसाद पैलेस at कलिंग नगर कि जो महाविजय प्रसाद अछि ताहाले एटा भी आपणकर कलिंग नगर ही हिथिला ना हां ना नहीं देखो डेफिनेटली दिस इज द प्लेस ऑफ विक्ट्री बोली हमर क्लास है 1 2 1 3 नेक्स्ट क्वेश्चन आसो कोन कहिछि देखो ना with reference to Kharabela's religious patronage consider the following statements आसो फर्स्ट कोन कहिला देन ये आपणकर सेकंड कहिला देन ये आपणकर कोन थर्ड कहिला फर्स्ट कहिला खारबेला वाज अ डिवोट ले डिसिपल and a champion of the Jain faith holding titles like कोन भिक्षु राजा तो मते कहिलो भिक्षु राजा बोली टाइटल आपणकर खारबेला पाइथिले ना नाही मते किए कहि परिबो खारबेला कहिथिले हां हां खारबेला वाज अ डेडिकेटेड कोन लॉ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म जोथि पाई तांकु भिक्षु राजा बोली कुहा जाउची कोनोसी कोनोसी मोनास्टिक स्टाइल दैट मींस ये आपणकर ट्रू हे गला देन कहिची ही convened a grand council of Jain monks and scholars at the Kumari Parvat. तो कुमारी पर्वत कथा जरे कहूची सी ऑर्गेनाइज करथिले he organized a major council of Jain monks and scholars at the Udayagiri hill to कोन ना कंपाइल करिबा लागि तो जो कुमारी पर्वत रहूची एटा आपनकर कोठी उदयगिरी हिल नहीं तो अछि ना ट्रू नेक्स्ट देखिबा despite his personal adherence to Jainism he maintained deep secular values से मेंटेन करथिले कोन ना deep secular values तो एटा आपनकर राइट ना नाही म देखंतु yes or no तो टोटल वर्शिपर ऑफ कोन थिले ना जैन कर वर्शिपर थिले जैन कर बिलीफ करथिले तो डेफिनेटली ये आपनकर कोन ना ठीक अछि तो राइट आंसर 1 2 1 3 ऑप्शन डी अगेन हां तो अगेन ऑल करेक्ट चलो नेक्स्ट देखिबा एटा ऑल करेक्ट न होई थाउ ना कि एटा ऑल करेक्ट हेले आउ त माने क्लास करिवनी मी जानछि हाउ को regarding the rock cut architectural caves constructed during the Meghavahana era consider the statements first कोन कहिला देखो सेकंड कोन कहिला देखो एंड आपनकर थर्ड फर्स्ट कोन कहिछि ना the residential monastic caves at Udayagiri and Khandagiri were excavated specifically for the comfortable seasonal stay of the Jain ascetics हाँ नहीं मत देखो कारण आपण माने जानि सदी खंडगिरी हो उदयगिरी हो खारबेला कोथि पई करथले जैन मंक्स माने आराम से बसी की तपस्या करि परिबे कोनोसी प्रकार कोन तांकु बाधा विघ्न न आसुबो so they were excavated हेथिला the two hills to serve as the monsoon shelter को मानक पई ना जैन मंक्स मानक पई नहल तो से माने बाहर भी बसी की तपस्या करि परिबे खरा रे करि परिबे वर्षा रे करि परिबे किंतु तांकु कोनोसी प्रकार असुविधा न हो ना पानी पडू ना खरा पडू सेथि लागि तो गुंफा करा हेथिला ता माने खंडगिरी उदयगिरी सेहि पे करा जाय सो राइट आंसर हे गला ऑप्शन ए हना नै नेक्स्ट कोन कहिछि ना तो रानी गुंफा जेटा कमे क्वींस केव कहू छ रानी गुंफा त आपण माने जानिथिबे कहिछि रानी गुंफा in Udayagiri is a two-storied pillared structure featuring detailed friezes depicting dynamic military processions of the folk dances. Definitely, रानी को सहित आपण माने जानिसन तांका पाखरे जतिक सब नृत्यांगना माने थिबे डांस करूथिबे तो डांसर्स मानक पई हेथिबो तो डेफिनेटली द रानी को फाइट्स टू टैड cave featuring elaborate narrative reliefs that depict the dynamic history of Odisha, dynamic battle scenes also, animal haunts also. रानी को नेई कि तो राजा माने शिकार रे जाउथिले ना मने पका से स्टोरी से सीन तो एटा आपनकर ट्रू हे गला नेक्स्ट कोन कहिछि देखो ता कहिछि द स्ट्रक्चरल केव्स ऑफ उदयगिरी वेयर एक्सक्लूसिवली patronized by खारबेला
while the adjacent Khandagiri caves were built entirely by the Morris. Ja ho 1 and 2 gote hei gala 1 2 gote hei gala देखो 1 and 2 only हैला so 3 आपनकर एलिमिनेट हे गला दीटा जाक ही खंडगिरी आपनकर कोन खंडगिरी उदयगिरी खारा बेला रे मौर्यन कोड आसिले मोर त आपनकर धौली आ जौगड ना हैला नेक्स्ट चला पढिबा कोन अछि वीडियो लैग होची कि ना लुका वीडियो लैग होनी हां वीडियो लैग होची ए वीडियो लैग कम नहीं होची 1 टा केमिति राइट हबो ए 1 टा कम बे राइट हबोनी कौन देइछि कि the residential monastic caves at Udayagiri and Khandagiri were excavated specifically for the comfortable season stay to join aesthetics joining आपनका जैन monks माने को पई तयारी हितला कोथि पई तयारी हितबो जैन monks माने कोन खरा रे बसा रे जदि से माने तपस्वी ताल तो बाहर बसिक भी तपस्या करि परिबे किंतु कोथि पई करा जायतिला तांकु गोटे कंफर्टेबल जोन रखिया पे एबे सपोज मु तम घर को गेस्ट हेकी गली मु कहबी ना ना ठीक अछि मते गरम भात दरकार नहीं मते पखाळ मु तम घरे पखाळ खाय मोर पखाळ फेवरेट मते पखाळ को देई दियो भजा भजी किछि भी मु खाइ देबी तमे तो पुणी तमरो कॉमन सेंस लगेबो ना ना तम घरे तम पखाळ खा आम घर को जेतु गेस्ट हेकी आछा आमे तो पूरा गरम भात डाली चिकन कसा टिके एग ऑमलेट टिके माछ भजा टिके कोन कोन करिकि दो तो एटा हमर गेस्चर तो ठीक सेमिति जॉइन मंक्स माने कोनोसी भी सिचुएशन रे रुहंतु बट आमे तांको कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करिवा सेटा थिला खारा बेला पर हैला बुझा पडुछि तो पुणी लैग होछि कि स्पेशली कंफर्टेबल थिला कि हां पिहु एटा कंफर्टेबल पाई ही तयारी करा जाय थिला हैला तो गुंफा रे तपस्या करिवाटा गोटे कोन कंफर्टेबल कहूना मते इज दैट द कंफर्ट जोन नो बट स्टिल दैट हैड टू डू फॉर द जैन monks because खाराबेला निजे जणे जैन कर डीप पैट्रोनिज्म थिला हैला पिहु रो मुंडा काम करनी पिहु कोछि मैम कोन भाई जो जदि तपस्या करिया कथा खरा रे वर्षा रे तांको गुंफा भीतर देकी कोन पे कंफर्टेबल जोन रखिवार अछि ना कि उच्च कोठी रे बुझेइबा तम माने को बुझेइबा त मोर सौभाग्य ना आसा मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कल्चरल एंड सोशल अपडेट्स प्रिजर्व्ड इन द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन है ना रियली करेक्ट हाउ आसा फास्ट कोन कहला देखो ना ये हे गला ऑप्शन 1 ये हे गला 2 ये हे गला 3 हैला फास्ट कोन कहि टिके देखि दियो तापरे छन छन हबो एबे होबनी हैला कोन कहि जी ना खाराबेला वाज डीपली अकम्प्लिश्ड इन द गंधर्व वेद गाइस वेद देखो मु तुमको कहूची ओसीएस एंड द वन डे एग्जामिनेशन भितरे हेल आ हेवन नो डिफरेंस तमाने जति की ऊपर ऊपर पढी दियो वन डे को सेति की भीतर भीतर तुमको देखिया को पड़िबो ओसीएस को तो जो क्वेश्चन पढौची सेरा टिके डीपली देखो हैला पिहु त खाली देखु देखु 1 2 1 2 1 2 देखो टिके तो खाराबेला वाज डीपली अकम्प्लिश्ड विथ द गंधर्व वेद द एंशिएंट साइंस एंड ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस डेफिनेटली ही वाज the text records that he organized grand theatrical performance, musical concert and festival to entertain the citizen of Kalinganagar. How yes. Then the inscription records the complete abolition of all maritime custom taxes, transforming Kalinga into a duty-free international trade hub. एटा कोन पे भूल हे गला ताले को मते ताहाले मते को 1 2 जदी पिहु ठीक कहिजो ताहाले नंबर 3 टा को भूल कोथि पई कहिजो ताहले जो आपनकर इंस्क्रिप्शन हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ने खारबेलंग विषय रे लेखा जाईछि मते को जे हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन विषय रे कोनो टैक्स विषय रे लेखा जाईनी लेखा जाईछि हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ने मेंशन करा जाईछि किंतु अर्बन टैक्स ऊपर सिविक एग्जांपल्स ऊपर but it does not record the complete abolition of all the international maritime customs and or any kind of tariffs एडा को abolition हेछि बोली कोठी मेंशन करा जाय किंतु अर्बन टैक्सेस आपनकर स्पेसिफिकली मेंशन करा जायछि ताको केमते रिलीफ दिया जायछि एंड आपनकर डिफरेंट सिविक सेंस ता ऊपर लेखा जायछि ए सब मेंशन करा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन आसा देखो तो 1 and 2 पिहु जेमते हमर आंसर देले से अकॉर्डिंग ठीक हे गला गुड इवनिंग सीमांचल बाबू ओसीएस रे बहुत दिन परे मो क्लास नेली आ तुम देखिबोनी आसो देन कोन कहि छि एबे टिके आसा पढो एरे भाई रे चारटा सेंटेंस कोन कहि देछि आसो नंबर 1 2 3 and 4 हैला ओप सॉरी शक्तिमान आसो आसो दिस वन 1 2 3 and 4
तो कौन कहिछि which of the following royal titles were explicitly adopted by King Kharavela as recorded in the history epigraphic मते को ए जो ऐरम द ग्रेट निया जाइछि आसो मु धन्य हे गले मैं हां सीमांचल मु भी धन्य हे गल तमानकर क्लास में 6th year tax remission 6th year tax remission हां तार खराबलंगर 6th रेगनल ईयर रे टैक्स रिलीफ करैथिले तो 6th year ही आपनकर टैक्स रिमिशन यस प्रदीप जना ओके नेक्स्ट मते कोंदु या भीतर कोटा आपनकर राइट आंसर हबो मते कोंदु आपन माने सुनिथिबे द ग्रेट खारबेला जदि एई वर्ड आपन माने सुनि नथिबे भी कोन ऐरम वर्ड सुन नथिबे ताहाले आपन माने सुनिथिबे ऐर माने कोन कहउनांती हाथी हन नै म देखुओ तो ऐरा बतरु ऐरा आपन माने जानि पारुथिबे हन नै सो ऐर माने कोन हाथी भली बड़ माने द ग्रेट तो ये आपनकर राइट चक्रवर्ती तो निहाती आपनकर हिथिबे कलिंगाधिपति तो निहाती धर्मराजा हां एटा मते कहले धर्मराजा टाइटल हेछि ना नै तांकर कलिंगाधिपति चक्रवर्ती ऐरम ए सब टाइटल अछि किंतु धर्मराजा टाइटल तांकर अछि ना नै यस सब टाइटल कोन 1 2 3 एंड 4 धर्मराजा भी तांकर हैला महामेघ वाहन टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ राइटियस धर्मराजा टाइटल निजे को निजे प्रोवाइड करी हैला नेक्स्ट चलो नेक्स्ट मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मथारा डायनेस्टी अच्छा मथारा डायनेस्टी रा पॉलिटिकल हिस्ट्री को टिके देखिया हैला आसा पढ कोन कहिची दिस वन इज 1 गाइस 2 एंड 3 मते को द Matharas rose to prominence in southern Kalinga following the historic southern campaigns of the Gupta Emperor Samudragupta. Is that true? Pachachi which are above are correct. तमते को ये true ना नहीं तो Mathara emerged हेथिले as a powerful regional force. को जगह रे ना southern Kalinga रे माने south को अपन माने Kalinga रे जिबे जति कोरापुट ए सब जगह अपन माने रिलेट कर परिबे मालकानगिरी कोरापुट इथे आपनकर origin हेथिले. But as a political disruptions जेते बेले आपनकर समुद्रगुप्त साउदर्न कैंपेन करिथिले सेई टाइम रे ही एमानकर कोन अभिव्यक्ति हेथिला राइट देन कहिछि दे सिस्टमैटिकली कंसोलिडेटेड देयर रीजनल टेरिटरी फ्रॉम द महानदी रिवर डाउन टू द कृष्णा रिवर बेसिन महानदी टू कृष्णा नाटा सुला सुला लागुछि ना त मते कहिलो ए जो महानदी रु कृष्णा आपनकर कहिछि चाटा टिके डाउट हाउ कि मु कहिली से चाटा मन रखि दिया सो मते कोआबे द किंगडम that was concentrated in the south Kalinga जदि साउथ कलिंग रे कहूची ताहाले महानदी रु कृष्णा तो केबे जीवनी किंतु महानदी रु गोदावरी पर्यंत जाई पाइबो नॉट डाउन टू द कृष्णा आपनकर गोदावरी आ टिके डिस्टेंट रहइबो तो गोदावरी जते बेले महानदी रु कृष्णा कहूची दैट मींस एटा गुड जदि महानदी रु गोदावरी कहितांता ताहाले आपण माने ताको राइट चूज कर टिके टिके छोटो छोटो जिंस को मार्क करके आंसर देख पड़े हैला Then upon Gasla, their administrative layout featured a unique operational structure where the kingdom was partitioned into blocks called Bhogos and Panchalis. Definitely Bhogo hela, Panchali hela, Visaya hela, ये सब अपन अगर कौन administrate करा जाए तो 1 and 3 option B. Next question आसा. Next question आसा. महानदी कृष्णा ना 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 पिहु ना मते किछि आसुनी ए क्वेश्चन देखि कि डर लागिलानी कौन करिवा क्वेश्चन ए टाइप रो आपनकर पछा आपन लागुथो अरे ओडिसा विषय मु कोन जानि मु सब जानि छी किंतु ओसीएस प्लेटफॉर्म रे जाई बसिबो प्री एग्जामिनेशन रे पछारिबो तमे आपने जानिबो ओडिसा ऊपर क्वेश्चन ये बहुत पुराना ओडिसा ऊपर क्वेश्चन आछि आसो मते को विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन एंड टेरिटोरियल रूल ऑफ शैलद्भव डायनेस्टी कंसीडर दीस स्टेटमेंट्स कौन कंसीडर करूची ना कोटा ट्रू हेथिबो ओके so this one is the 1 this one 2 and again 3 तो फर्स्ट सेंटेंस कौन कहिछि जस्ट हैव ए लुक हियर पहिला तो शैलद्भव देखो शैलद्भव एठु जति क्वेश्चन आपन को आसीबो कोठु उद्भव हेछि शिलारु उद्भव शैलद्भव मन रखिबाटा शिला मींस पत्थर mythological belief अछि कि they were being originated from the stone okay next step so the शैलद्भव exercise independent political authority over the historic territorial division known as the Kongodo Mandal. Definitely आपण माने जानि संती तांकर strategic geographical territorial ना कोन थिला Kongodo Mandal थिला तो ये हे गला आपनकर true one then कहिछि their primary capital and administrative seat was located at Kongodo Vasudha
on the bank of the Soila river near Chilika lake. मते कोंतु एटा आपनकर true ना नहीं. The main royal capital was situated in the Congoda Vasudha ही. तो ये भी आपनकर true हे गला. तो कौन ना ये भी आपनकर true हे गला. Then कौन कहिची मते को ना next कहिची को inscription कथा देखो आसो ना कहिची the legendary origin myth of the dynasty recorded in the copper plates describes their ancestor Pulinda Sena regenerating the family line out of the split rock. एबे बा कहली कोदिरु ना शिलारु जात शैलदुभव शिलारु उद्भव शैलदुभव तो तांकर फास्ट फाउंडर बोली तो आमे जानिने कारण कोउठी तांकर उद्भव आमे जानिने सेथि लागि तांकर फास्ट राजा को आमे कहूचे पुलिंद सेना तो पुलिंद सेना कोउठी उद्भव होइसंदी ना शिलारु सेथि लागि तांकर जनरेशन ना माने डायनेस्टी ना शैलदुभव हैला सो डेफिनेटली ये भी ट्रू तो 1 2 1 3 अगेन ऑप्शन डी हाँ कृष्णा नहीं पिहु कृष्णा भी साउथ रे गोदावरी भी साउथ रे किंतु कृष्णाटा आपनकर टिके ऊपर पार्ट रहउची साउथ रे आपन जो गोदावरी आपनकर टिके तळ पार्ट रहउची कृष्णा तो आपनकर कोन माने देखंतु जदि आंध्र प्रदेश हैला कृष्णा नदी एग्जैक्टली एटा आपनकर बॉर्डर हैला एटा आंध्र प्रदेश हैला केर आपनकर ओडिशा हे गेला तो ओडिशा रे जते बेले आसुची आंध्र प्रदेश को टच करछ तते बेले गोदावरी सहित मिसुची किंतु कृष्णा नदी आपनकर आंध्र प्रदेश ता तो ओडिशा रे कोनोसी स्ट्रेस नै आपनकर सबरी हैला गोदावरी रा ट्रिब्यूटरी सिलेरु हैला गोदावरी रा ट्रिब्यूटरी माने इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी तो ए सब मिशन देसे गोदावरी सहित किंतु कृष्णा ता आपनकर एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश सहित कृष्णा सहित ओडिशा रा कोनोसी रिलेशन नै ता अकॉर्डिंग मन रखियो हैला इहु बुझेली ना आपनकर ये जदि आंध्र प्रदेश रा बॉर्डर हैला ये हैला ओडिशा रा बॉर्डर कृष्णा नदी आपनकर एई पटे फ्लो होईची किंतु गोदावरी नदी आपनकर एई पटे फ्लो होईची दैट मींस एपट जो नदी सब आसीबो आगो गोदावरी सहित मिसिबो कृष्णा नदी आपनकर आसी कि कोनी गोदावरी सहित मिसिची तो डेफिनेटली गोदावरी रो ये ट्रिब्यूटरी किंतु ओडिशा सहित यार किछि लिंक नाही हैला बुझा गला पिहु ए पिहु पिहु बुझा गला लैग होची कंटीन्यूअसली कोन करबी लैगिंग बहुत टाइम क्लास स्टार्ट हे जाईची ना कोन टिके रुहो चेक करूछ हो नेक्स्ट देखो आसो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल रिलेशंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द शैलदुभव कंसीडर द स्टेटमेंट्स आसो सर ओ वीडियो लैग होची के टिके चेक करले YouTube classes हाँ आसो रिगार्डिंग कहिछि पिला माने गॉट इट मैम कांदु छ कोन बुझेबे को कहले तो बुझेली ना आसो मते को रिगार्डिंग द पॉलिटिकल रिलेशंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द शैलदुभव कंसीडर दीस स्टेटमेंट्स ताको हम कंसीडर करिबा कोटा हैव अ राइट आंसर हैला देखो भलो से पढिबो बुझिबो फर्स्ट कहिछि 1 2 and 3 okay first कौन कहला ना early शैलदुभव kings like Madhav Raja second initially acknowledged the imperial overlordship of the Gauda king Sasanka king के थिले माधव राजा द्वितीय इनिशियली रूल करूथिले कोठी ना एज अ बसाल चीफ पुलिस इनिशिएट करूथिले बट आफ्टर एक्नॉलेज कला पर द इंपोरियर जेटा कि हमें कहू जेरिनिटी हमें कहि परिबा द पावरफुल एंटी बुद्धिस्ट आपनकर जे थिले कोन गौड़ किंग शशांक ये त आपनकर ट्रू हे गला देन कहूची दे वर ardent champions of Vedic Brahmanism with king Madhav Raja द्वितीय successfully performing the prestigious अश्वमेध यज्ञ yes it's true then कौन कहिची ना under their rule Buddhism completely disappeared from the coastal landscape of Odisha एटा केमिति हबो रे मते कहंतु आपण माने मते कहंतु क्वेश्चन कोन कहिची ना कहिला जते बेले फर्स्ट सेंटेंस जदि राइट होला ताले सेकंड टा आपनकर रॉन्ग हबो ना कारण बुद्धिज्म डिड नॉट कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम द रीजन जते बेले आपनकर वेनसांग आसीथिले मने पकांतु केबे 7th सेंचुरी रे 639 आपनकर वेनसांग जुएनजांग चांग बमे कहउची तले आसीथिले सेते बेले ट्रैवल करिथिले ट्रैवल लॉग रे रिकॉर्ड करिथिले को विषय रे ना हिनयान ग्रुप विषय रे जदि हिनयान ग्रुप आपनकर लोकल ग्रुप आपनकर लोकल प्रेशर रे आपनकर प्रेजेंट थिले दैट मींस आपनकर बुद्धिज्म थिला कारण 7th सेंचुरी रे निजे वेनसांग मेंशन करछन्ती ताहाले ये त आपनकर कोन फुल हे
हे गला तो 1 and 2 हे गला प्रति क्वेश्चन प्रति ऑप्शन रे गोटे गोटे लॉजिक खोजिबा हैला नेक्स्ट चलो तीनटा व्हेन्स यस गाइस व्हेन्स नेक्स्ट आसो अगेन कहूची गाइस आपण मानक पई गोटे फ्री मॉक टेस्ट रो सीरीज लॉन्च करिछि वेदांग सिविल सर्विसेज जोथि आपण मानक गोटे टंकाटे देबा को पड़िबनी किंतु आपण माने बहुत बढ़िया की प्रैक्टिस करि परिबे एंड एटा आपणकर अपकमिंग प्री एग्जामिनेशन पई आपण को बहुत 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 हेल्प करिवो जदि आपण माने कोनोसी गोटे गोटे ड्रीम रखिचंदी टू बी लाइक आपनकर कोन सिविल सर्वेंट ताहाले आपण माने डेफिनेटली जाई के थरे प्रैक्टिस करन तो लेवल ऑफ क्वेश्चन टिके देखंतु आपण माने करि पारिबे ना नाही देखंतु जदि 10टा सेट देला पर आपण माने भाबि जदि करि पारिबे त डेफिनेटली आपण माने जानते आज्ञा सर नेट केमते जानिबी ए ओबीएस रु फुल अछि ग्रीन पूरा फुल आज्ञा पिहु फ्री से या तो मु कहूची ए टोटल सीरीज ता ना आपन को फ्री दिया जाउची कोथि पई जो माने डरू चंदी कि हमें मॉक टेस्ट हमें किछि ओसीएस रे किछि करि परिबोनी ओसीएस बहुत टफ ता एटलीस्ट जाओ जदि गोटे रे तमने को डर लागिबो भाबियो किछि जानना दीटा रे डर लागियो चलो 5 नंबर जाय मॉक टेस्ट जाय तुमको डर लागिबो बट तमने 5 नंबर थी जानि परिबो को लेवल ना क्वेश्चन आसुची 6 नंबर अटेम्प्ट करे पूर्व तमन को माइंड कैसे हम चला आउ थरे 5टा तक रिवीजन करके 6 नंबर मॉक टेस्ट देबी आ तो तमे 10टा जाक मॉक टेस्ट देलो ना तुमको से कम माने गोटे आसीबो ना माइंड भीतर को यस आई आल्सो कैन तो तमे माने भी जाई के एग्जाम रे बसी पारिबो तो माने एग्जाम देई पारिबो एंड एटलीस्ट प्री तो क्लियर करि पारिबो मेंस क्लियर करबा लागि कोनोसी मॉक टेस्ट नै मेंस क्लियर करबा लागि आपण मानकर निजर जिल थिया दरकार निज मानकु सेति के फोकस रे सेति के कंसंट्रेटली पढिबा दरकार आ जदी पढिलो प्री तो मु तमरा क्लियर करे देबी मु कहूची तमरे मो गाइडेंस रे पढिबो जदी किंतु मेंस पई तम मानकु परिश्रम करिया पड़िबो सेथिरे भाई केही किछि हेल्प करि परिबे कारण तमे माने कोन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखियो दैट्स डिपेंड अपन यू टोटली ओके मु जिबी कोडे जिबो पिहु आसो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन आसो औथरे पढिबा तो सोई था जी उठुनिया यस पिहु आप रे अरे भाई रे भयंकर लैग होची देखिए इंटरनेट ओ प्रॉब्लम टा इठी होची आ आज्ञा सर टिके लैगिंग इशू होतिला सेटा हो जी प्रॉब्लम आ कुछ प्रॉब्लम नाही सर लैगिंग इशू ते इवनिंग हेले कोन रंजित सर कहिले जियो रो इंटरनेट इशू होची बोली सब बेले
ओके तो नेक्स्ट इबा कोन कहूची देखिबा चंदन सर आपण पचार देले माने प्रॉब्लम सॉल्व हे गला आगुर हो नथले आपण पचारला पर सॉल्व देखो consider the following statements regarding the emergence and capital of the Bhaumakara dynasty जदि आपण को emergence कथा पचारुची capital of Bhaumakara dynasty पचारुची that means आपण माने कोन मारिबे क्विकली आंसर देला देखि emergence and capital statement आगो पढा तापर आंसर देखो फर्स्ट कोन कहैछि number 1 2 and 3 first kala the Bhaumakaras established their rule in coastal Odisha around the mid 8th century ru pushing past the fragmented political landscape of the Kongoda and Tosari the right or wrong the Bhaumakara dynasty bisare jaldi हुआ the Bhaumakaras established their rule कौन in the coastal Odisha around 736 common era जोटा 8th century बोली हमें कहि परिबा unifying the fractional political units कोठी कोठी थिला कंगोड थिला उत्कल थिला तोसानी थिला तीनटा जगह आपनकर थिला तो डेफिनेटली ये आपनकर ट्रू हिगला then कहछि their royal political कौन their royal political capital was located at the prosperous urban center of the Guheshwara Patna बापरे आसो historically identified with the modern Jajpur को आपनकर ancient name जदि हमें कहबा कोन गुहेश्वर पाटना बुझ पालु तो the dynasty epigraphics आपण माने कोन कहिबे जाजपुर भी राइट हबो हां डेफिनेटली भी ये भी राइट हबो then हमें कहबा the dynasty epigraph show a unique calendar calculation layout utilizing their own specialized regional dating system known as the भौम एरा तो डेफिनेटली ये भी तो 2 हे गला भौम एरा ही तमे कहउछे तो 1 2 and 3 बिहु कोन हैला ना तीनटा जागा ऑप्शन राइट हे गला नेक्स्ट बा आसो मते को यार द भौमकर डायनेस्टी इज सेलिब्रेटेड इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री for its notable female sovereigns consider the following statements in the context आसो पढिबा पुन थरे कोन कहउची ना कहिची 1 देखु छ तो गोटे गोटे डायनेस्टी देके हमें जाउछे हैला और at least 6 brilliant female rulers definitely Bhaumakara dynasty कहउची माने आपण मान जानसंती female rulers are brilliant at that dynasty that means हमें कहि परिबा मेजर 6 जण रूलर्स थिले जांको हमें कहउचे दे वे तो मुंडिस ओके नेक्स्ट कहउची त्रिभुवन महादेव वाज द फाउंडेशनल फीमेल फाउंडेशन तो क्षमा करते किंतु क्वेश्चन पचाची कोन फाउंडेशनल फीमेल सोवरेन ए फीमेल रूलिंग स्टार्ट हला स्टार्टिंग हेची का टू द त्रिभुवन महादेव तो ऑब्वियसली एको में ट्रू कहबा देन कहछि दीज क्वींस ओके these queens only as nominal regents for minor sons and were completely barred from issuing independent copper plate land and सेमिति बिल्कुल नाही एमाने nominal regents नथिले एमान को पाखरे सबु पावर थिला त माने 1 and 2 हिला आपनकर राइट काहे कि nominal नथिले काहे कि nominal कथा आसुची these queens ruled as a fully empowered territory head not like a nominal मान तांकर पुओ या फिर तांकर हस्बैंड वीक थिले पुओ वीक थिले पुतरा वीक थिले सेति पई से माने सीट रे बसी नथले दे वर टोटली नॉट ऑफ दैट टाइप इंडिपेंडेंट थिले सोवरेन्स थिले जो माने मैनेज करि पाथले टोटल सब मिलिटरी आरंभ करी कंडक्ट करूथले जेते सब डिप्लोमेसी थिला तो डेफिनेटली दे वर दैट मच सुप्रीमेसी इशूड करूथले इंडिपेंडेंट लैंड ग्रांट्स आल्सो ओके नेक्स्ट चलो मते गुआ with reference to the political actions of the Bhaumakara queens consider the following statements asa padha number 1 2 and 3 okay done the तीनटा ओनली हबनी हां तीनटा ही हबनी देन कोन कहै छ सटिके देखो फर्स्ट पहिला पॉलिटिकल एक्शंस ऑफ द Bhaumakara queens देखो ना पृथ्वी महादेवी who ascended the throne as शुभंकर देवीस शुभंकर देव चतुर्थंकर wife माने तांकर widow बोली was the daughter of the powerful western Ganga monarch southern India थिले की मते को पृथ्वी महादेवी आपण मान जानसंती पृथ्वी महादेवी को कोन को आसे तांको आ गोटे टाइटल दिया जाय छि त्रिभुवन महादेवी द्वितीय बोली काहे कि कारण as like the त्रिभुवन महादेवी was so powerful in her dynasty Bhaumakara dynasty सेम वे रे त्रिभुवन जो आपनकर पृथ्वी महादेवी मत थी सेथि लागि तो विडो हैला परे भी से शासन भार संभाली थिले तो मने रखंतु शी वाज द डॉटर ऑफ द किंग जन्मेजय प्रथम जे कि आपनकर वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो रूलर थी के थिले जन्मेजय प्रथम रूलर ऑफ
Western Ganga dynasty. Jemiti Eastern Ganga dynasty, ठीक सेमिति Western Ganga dynasty. Then कहिछि the final independent rulers who closed. Sorry, এটা one গলা 2. Gauri Mahadevi and her daughter Bakula Mahadevi. Okay, Gauri Mahadevi and ତାଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ଥିଲେ Bakula Mahadevi. So Bakula Mahadevi successfully preserved internal political stability during the latter phase of the dynasty. Definitely Bakula Mahadevi ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 6 ଜଣ female rulers ମାନଙ୍କ ଭିତରେ Bakula Mahadevi ବି ଅଛନ୍ତି. Then କହିଛି the final independent rulers who closed out of the political history of the Bhaumakaras were the sisters Dharma Mahadevi and Bakula Mahadevi. Dharma Mahadevi and Bakula Mahadevi कौन sisters थिले कि मते कुआ. And जदि आपण कहूची last किए थिले जल्दी the final independent ruler of the lines माने हमें कहूचे भौमकर डायनास्टी रो last ruler कहां कहबा ना धर्मा महादेवी तांको सहित बकुला महादेवी but they were consecutive कौन थिले ना wives of the different kings. They were not the sisters. से माने कोन डिफरेंट राजा मानकर वाइफ थिले एंड हमें कहि परिबा कोन से जाफा थिबे आ कोन किंतु भौणी नथिले हैला. सो दे सिस्टर सेठी मेंशन कर देछि सेठी पई ये रंग हे गला पॉइंट टू अगेन. तो छोटो छोटो जिंस को माइंडफुली माने त माने को मन रखि के आंसर देको पड़ हैला. नेक्स्ट चलो मते को अगेन पचारुछि रिगार्डिंग द रिलीजियस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशंस अंडर द भौमकर डायनेस्टी कंसीडर दिस स्टेटमेंट्स. आसो पुनी पढ ये हेला नंबर 1 2 एंड आपनकर 3 कोन कहिछि ना अली भौमकर मोनार्क्स लाइक क्षमांकर दे एंड आपनकर के रहउचंती ना शिवंकर दे. ओके तो एमान को कहिछि कोन ताकु टिके देखो हैला. कहिछि अली भौमकर मोनार्क्स लाइक क्षमांकर दे एंड शिवंकर दे प्रथम वेयर डिवोट पैट्रन्स ऑफ महायान एंड वज्रायन बुद्धिज्म. डेफिनेटली महायान एंड बुद्ध सॉरी महायान एंड वज्रायन करे माने फॉलोअर्स. King Subhankar Dev I dispatched a diplomatic embassy to the Chinese Tang Emperor Tishans, presenting an autographed philosophy Buddhist manuscript. Definitely true. Later Bhaumakara sovereigns, especially the queen, shifted state patronage towards Shaivism and Vaishnavism, facing temples like the Baltal. ताले आपनकर ये ठीक हे गला. तो राइट आंसर आपनकर कोन 1 2 and 3 कोठी अछि ऑप्शन डी 1 2 and 3 ऑप्शन डी हैला. चलो नेक्स्ट. गुड इवनिंग बापी बाबू. बापी हियल एटा तुम टाइटल बापी हियल. आसो नेक्स्ट आंसर मते दियो. Arrange the following ancient political entities of Odisha in their correct chronological sequence of the emergence. That means earliest to latest पर्यंत. तो स्टार्टिंग रे आपण माने कहा को कंसीडर करिवे ना स्टार्टिंग रे आपण माने भौमकर अछि मौर्यन अछि तलुक अछि महामेघ बाहन अछि. फास्ट आपनकर मौर्यन तापरे सब महामेघ बाहन. ये होला 1 ये होला 2 माने ये आपनकर 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हैला एमिति अछि. ता माने ये आपनकर 1 हैला तापरे आपनकर 2 1 परे 2 कोठी आपनकर अछि ऑप्शन मते कोन माने 2 नंबरटा हैला आपनकर फास्ट 2 नंबर कोठी ए दीटा अछि. ये हैला एलिमिनेट ये हैला एलिमिनेट. 2 परे आपनकर काहा को कहली 4 को कहली 2 परे 4 की अछि ये अछि ऑप्शन ए हैला राइट. गला सल्ला एलिमिनेशन आपन जानि देले हां तो तापर आपन माने सीक्वेंस चेक कर देबे. नेक्स्ट म देखो आसो पुनी कोन कहिछि. Consider the following statements regarding the political unification of Odisha under the Somavanshi. Somavanshi को पर्यंत आपण माने आसंतु एंको यूनिफाई कर कोन कहिछि ना Odisha under the Somavanshi. फास्ट कहिला एटा आपनकर ट्रू और नॉट मते कहिबो. फास्ट कहिला Odisha under the अच्छा सोमवंशी टाइम रे हां जन्मेजय 1 महा एटा को फर्स्ट ऑप्शन 1 देखंतु देन एटा 2 देन एटा 3 हैला. मते को जन्मेजय 1 महाभवगुप्त systematically expanded the dynasty's authority from south Kosala eastward into the lower Mahanadi valley. तो ये अपन को ट्रू और फॉल्स मते को जन्मेजय प्रथम जे महाभवगुप्त बोली कुहा जाय तांको जन्मेजय प्रथम महाभवगुप्त तांकर फुल नाम. He laid the foundation stone. He laid the foundation of the dynasty's expansion by systematically pushing their political influence कोठु ना साउथ कोसळ रु नेकी ईस्टवर्ड महानदी वैली पर्यंत. तो ये हेला आपनकर राइट ठीक अछि. स्टेटमेंट 2 आपनकर कहिछि कोन सर
देखो देन कौन कही किंग जजाति केसरी Jajati Kesari consolidated the empire by merging the twin geopolitical units of South Kosala and Utkal into a single political entity. हाँ एठी हला important point. कौन कही ना जजाति केसरी आपण माने जानि थिबे कहाँ सहित रिलेट करछ सोमवंशी डायनेस्टी जे आपणकर तयारी करथिले लिंगराज मंदिर तांकु कंसोलिडेट करा जाउची these are grants by the formally merge करथिले आपणकर कोन ना दीटा साउथ कोसला एंड उत्कल को मर्ज करथिले जजाति केसरी तो ये भी ट्रू मन रख नेक्स्ट आपन को पछनला द सोमवंशी मेंटेन्ड ए हाईली सेंट्रलाइज्ड मैरीटाइम फ्लीट मते कोन सोमवंशी मानक सहित कोन पढी दिया गो बेस्ड एट द पोर्ट ऑफ द पल्लूर एंड काउंटर चालुक्यन नावल आपन के एडवांसेस तो या सदा हमर रिलेट हबो कि सोमवंशी वेयर द लैंड सेंटर्ड imperial power that unified the interiors and coastal plains and they did not build or maintain a highly centralized Palur port. So rahila 1 and 2 only. Clear? Juhar, Juhar Ganesh. Aso. Mate kuha with reference to the religious policy and cultural shift during the Somavanshi rule, consider these statements. Somavanshi rule according as a puni thare consider kara statement kota apanakara bhul achi kore. First कहला 1, 2, 3. पहला तो सोमवंशी रूलर्स were devout followers of Buddhism who actively suppressed the local tantric आपनकर पशुपत शैविज्म सेक्शन तो एटा मते कोंतु सोमवंशी माने आपनकर बुद्धिज्म रा फॉलोअर्स थिले कि को मते and they were heavily patronized and constructed the grand Saivite temple rather than कोन अरे से शिवं को शैविज्म थिले से माने बुद्धं को सपोर्ट करू नथिले तो ये गला आपनकर रॉन्ग दे गला किंग जजाति केसरी आपण माने शिव मंदिर लिंगराज मंदिर आपनकर सोमवंशी डायनेस्टी रो राजा जजाति केसरी तयारी करथले तांको अकॉर्डिंग मन रखि परिबे हैना हाँ जय जगन्नाथ चंद्रशेखर आसा किंग जजाति केसरी द्वितीय इज हिस्टोरिकली क्रेडिटेड विथ परफॉर्मिंग ए मैसिव 10 horse sacrifice at Jajpur to revive orthodox Vedic Brahmanism तो ये आपनकर कोन हे जिवो डेफिनेटली ये हे जिवो ट्रू they championed the use of Sanskrit for official court business and corporate charters replacing the earlier reason Prakrit dialects ये भी ट्रू तो 2 and 3 only have option B right option B हे गला right okay 2 and 3 definitely next question आसा पड़ा मते कुआ कोन अब राइट आंसर है गुटे पढी की गोटे मिनिट दियो टिके मु बसुची आंसर दियो तो माने यारो पानी ही पिउची गणेश जे बहुत टाइम क्लास से गला मो बैग रे रोल ना छी 1 and 2 देखो जेतबेले कहूची आपन को आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन ड्यूरिंग द सोमवंशी पीरियड आपन को पचारुची ओके दैट मींस द रिगार्डिंग द फर्स्ट सेंटेंस कोन कहूची देखो बाहर थिबो देखि द मुक्तेश्वर टेंपल एट भुवनेश्वर रिप्रेजेंट्स द इनिशियल experimental transition stage where the early features morphed into mature Kalinga architecture definitely आपणकर कलिंग आर्किटेक्चर गोटे ज्वलंत उदाहरण होउची हमर जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर जेम ऑफ ओडिशा टेंपल आर्किटेक्चर जोडा को हमें कहउचे मुक्तेश्वर टेंपल तो ये आपणकर राइट हे गला नेक्स्ट आपन को कोन कहबा मते को नेक्स्ट आपन को कहउची The Lingaraj temple stands as the grand architectural climax of the Lingaraj temple, sorry,
climax of the Somavanshi style showcasing all four components देउल जगमोहन नाटमंडप एंड भोगमंडप मते को ये भी आपनकर ठीक जेते बेले कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर कहूची आपनकर सेम देउल रहूची माने रेखा देउल जगमोहन पीढ़ा देउल नाटमंडप भोगमंडप ए सब जिंस आपनकर रहइबो देन आपनकर होची थर्ड सेंटेंस द सोमवंशी एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज सॉफ्ट soapstone imported from the central India to achieve deep बिल्कुल भी नुआ जदि ओडिसा रे कोनोसी टेंपल आपनकर तयारी होउची दैट मींस आपनकर तयारी हबो जे कोनोसी लोकल रीजनल एक्सट्रैक्शंस और हमें कहि परिबा डिफरेंट टाइप रो कलर्ड सैंडस्टोन यूज करके हमें कोनोसी नॉर्दर्न इंडिया हो या फिर आउट ऑफ ओडिसा कोनोसी प्रकार स्टोन को हमें कोन ना इंपोर्ट करे कि आनिने मैम ऑप्शंस नंबर कले अरे चंद्रशेखर ऑप्शंस नंबर टा भूली जाई छी माने मु करी थिली बट सेटा कटि जाई छी केमती तो राइट हे गला आपनकर कोन तमे लेटर आसलो ना जानि ना ये हला 1 ये हला 2 ये हला आपनकर कोन ना 3 ओके सॉरी 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 मु तो जानि पनी तम कोन ये हे गला 2 एंड ये हे गला 3 हैला तो ये आपनकर रॉन्ग हैला ये दीटा 3 के गला 1 एंड 2 ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राजारानी टेंपल एट भुवनेश्वर काली पढैतिली राजारानी टेंपल भुवनेश्वर रे नंबर भूली जाइछि मैडम को मुंडो काम करनी मैडम को मुंडो माड़ हो जाइछि देखिलो इंस्टामार्ट रे अवेलेबल अछि रोल नंबर मगे देलो देखो consider the following statements about the Rajarani temple at Bhubaneswar first कोन कहछि 1 then कहला 2 then कहछि 3 first कोन कहछि देखो राजारानी टेंपल तमरा ओके फर्स्ट कहिला it was constructed during the peak of the Somavanshi rule and is structurally unique because it lacks a primarily presiding deity icon inside the sanctuary exactly आपनकर कोन ये हे गला ट्रू कारण आपनकर मंदिर भितरे कोनोसी देवा देवी पूजा पाती नाही कंस्ट्रक्टेड हेइतिला केबे कहार को डायनेस्टी पीरियड रे सोमवंशी डायनेस्टी पीरियड ठीक अछि देन आपन को पचरिछि कोन Now the temple शिखर feature an arrangement of cluster maintained spires. आपनकर कोन एटा को अंग शिखर कह जाछि that resembles central Indian Nagara temple forms like कोन ठीक ना नहीं मते को ये भी आपनकर ठीक जोटा को खजुराहो टेंपल जदि आपन को गला कि टेंपल्स लाइक खजुराहो टेंपल कोटा प्रेजेंट अछि शिखर ताहाले आपनकर राजारानी टेंपल and it was built using the distinct yellowish red local sandstone जदि ठीक अछि लोकल स्टैंडस्टोन कहला माने ठीक अछि जदि कोडा माने एक्सपोर्ट हे के आसी छी कहबो तालेटा भूली जिवो हला राजारानी मंदिर रे पूजा हुए नाही बिहु तमे देखिछो तमे जाईछो राजारानी मंदिर हां आसो मते को कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोमवंशी रूलर्स एंड देयर मेजर एसोसिएटेड आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स फर्स्ट कोन कहला ना जजाति केसरी यांकु कोन कहिछि ना जजाति केसरी को रिलेट करिछि सुवर्ण मेरु टेंपल एट सोनपुर तो मते कोन जजाति केसरी आपनकर सोनपुर थारे सुवर्ण मेरु टेंपल तयारी करिसंती कि हां ना नाही मते को हां ना नाही को 1 2 एंड 3 3 की पढेलानी ललाटेंदु केसरी लिंगराज टेंपल कंप्लीट करिथिले आपनकर ललाटेंदु केसरी आपनकर ठीक करथिले ठीक अछि एटा आ उद्योत केसरी कोन करथिले ऑल करेक्ट केमिति ललाटेंदु केसरी तमरा करथिले ना उद्योत केसरी करथिले कोन सब करूछ
उद्यत केसरी कौन करथिले ताले मते को जदि ललाटेन्दु केसरी को आपण माने राइट मारुसंती ताले उद्यत केसरी कौन करथिले कुह को ओ अच्छा ललाटेन्दु केसरी और उद्यत केसरी सेम कंफ्यूज करथली तमा यस तो आपणकर उद्यत केसरी जी ललाटेन्दु केसरी को आपण कंसीडर करा जाउची तो आपणकर ऑल 1 2 3 एंड ट्रू हे गला हैला चलो नेक्स्ट मते कोंदु regarding the administrative structure of the Somavanshi state consider the following statements अच्छी हाँ one last check करिवु दुई जना करिथिले दुई जना कोन डिफरेंट लोक थिले ओ देखो regarding the administrative structure of the Somavanshi state consider the following statements कहिछि the empire was systematically partitioned into primary macro territorial units known as the mandala and bhuktis तो मते कोंतु सोमवंशी को कथा आसो सोमवंशी बेले आपनकर कोन कह जाउतिला ना सेम आपनकर टेरिटोरियल लेआउट से माने करिथिले तांको मंडल बुक्तिस एंड आपनकर विषय रे कन्वर्ट करथिले तो डेफिनेटली आपनकर ट्रू हे गला देन पचारिछि कोन 1 ये हे गला 2 देन ये हे गला 3 हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियोज लाइक द कोन संधि विग्रहिक मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस वेयर फ्रीक्वेंटली हेल्ड बाय द hereditary scholar officials. That's also true. The village administration was entirely autonomous and was legally barred from the maintaining direct communication with the provincial विषयपति तो ये आपनकर ठीक अछि कि village administration कथा कहूची पुनी विषयपति कोन बे रिलेट करछ मते को village administrate आपनकर administration जोडा को कह जाउतला तांको कोन कह जाउतला तांको ना थिला ग्रामोक्तस कोन विलेज हेडमैन कह जाउतला या फिर ग्रामकुटस तांको कह जाउतला तो ये होला रॉन्ग 1 and 2 हे गला राइट नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the governance and military actions of the Anga Bhima Deva Tritiya माने तृतीय अनंग भीम देव consider these statements तांको according ठीक statements को पढो 1 2 3 अरे gosh answer तृतीय अनंग भीम देव ओके देखो फर्स्ट कहि ही ट्रांसपोर्ट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द Congo empire to the अभिनव वाराणसी कटक ट्रू he formally dedicated his entire empire to Lord Jagannath declaring deity as a real sovereign ruler samraj and styling himself as a deputy राउत तम देखो ये आपनकर ठीक अछि निजको कोन जगन्नाथकर दास बोली अनुप्राणित करिथिले कहूथिले 30 नंबर 7 स्किप हे गला Oh, sorry. Oh, देखो देखो consider the following statements regarding the तृतीय अनंग भीमदेव first कौन कहिछि number 1 number 2 number 3 कहले he successfully unified the three sub regional zones of कलिंग उत्कल and कंगोड मते कोंतु कलिंग उत्कल and कंगोड को कोन successfully unify करिथिले ना नाही कोंतु yes करिथिले definitely ये आपनकर true हे जिवो then कहला he initiated the construction of the present day monumental जगन्नाथ मंदिर तृतीय अनंग भीमदेव आरंभ करिकि अनंग भीमदेव सारिथिले अनंग सॉरी तृतीय अनंग भीमदेव आरंभ करिकि अनंग कोन के ना आंसर को अनंत वर्मन चोड़गंगदेव आरंभ करथिले एंड तृतीय अनंग भीमदेव ताकू एंड करथिले एठी पचारुछि काकू अनंत वर्मन चोड़गंगदेव विषय तेणु एटा आपनकर राइट हेला देन पचारछि वैष्णविज्म अंडर द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट सेंट रामानुजन यस रामानुजाचार्य भी थिले तो ऑप्शन 1 2 3 एंड 2 नेक्स्ट कौन हैला पीहू मुंड तो मोर बिछि तमरो कोन हैला देखो नेक्स्ट म देखो रिगार्डिंग द मिलिटरी जेनस
तो मिलिटरी जीनियस कथा आस कौन कहूँ ना गवर्नेंस एंड मिलिटरी एक्शंस ऑफ द अनंग भीमदेव तृतीय और तृतीय अनंग भीमदेव हम कहूँ फास्ट कौन कहूँ देख 1 2 3 फास्ट कहला he abandoned the defensive border containment and launched aggressive successful counter offensives directly into the Muslim territories of Bengal तो ये आपनकर ठीक खबर नहीं मते कहंतु yes or wrong तीनटा भूल बाकी सब ठीक अछि चलो 1 and 2 आपनकर 3 and 3 टा आपनकर 4 1 2 1 2 1 2 1 2 गला 1 and 2 ओके नेक्स्ट चलो मते को with reference to the layout of the Jagannath temple at Puri built during the Ganga era consider the statement consider करो statements मान को फर्स्ट कोन कहिछि देखो हैला कौन कही with the temple complex is surrounded by two concentric stone boundary walls दीटा टाइप रे आपनकर stone boundary अछि ना नै मते कोन yes or no गोटे आपनकर जो अछि मेघनाथ पाचेरी तापर भीतर पाटा को आ गोटे कोन एक्जेक्टली मोर नाम माने पडुनी कुरुम बेठा yes काली माने पेड क्लास रे पढैथिबी तो गोटे आपनकर कुरुम बेठा गोटे होची मेघनाथ पाचेरी लेखा हिची हम काई एंदे होची हां नेक्स्ट देखो देन कही नंबर 2 The main Vimana spire is built using the advanced architectural principle of the curveiling and towers over the adjacent assembly halls. That's also true. Then कौन कहिछि The structure Natta Mandapa, the dancing hall and Bhoga Mandapa offering hall were built mass later by succeeding dynasties not during the original construction phase. मते कोंतु एटा आपनकर ठीक ना नाही नाट्य मंडप ता सहित भोग मंडप लिखिछि were built during the latter phase of the Ganga dynasty itself ओके तो किए ना भानुदेव चतुर्थ थिले भानुदेव तृतीय थिले माने तयारी करथिले डिफरेंट नॉट एंटायरली सक्सीडिंग बाय द डिफरेंट डायनेस्टी क्वेश्चन ना लेवल टा खाली देखि दियो लेटर बाय सक्सीडिंग डायनेस्टी माने डायनेस्टी आपनकर एंड होला पर अदर डायनेस्टी को तयारी करछन सेटा हले भूल यदि अलगा रूलर्स माने पचारि थांदा ताहाले थांदा ठीक सेति पई ये देखिबा 60% भूल लागुची एक्जेक्टली पीयू पूरा पूरा पिन पॉइंट रे आंसर दोची ओके डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ना कोन कहउछ करू क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ओके गाइस तो कौन कहउतली ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ द सन टेंपल एट कोणार्क फर्स्ट कहला सेकंड कहला थर्ड कहला कौन कहला देखो कहला कि the temple layout represents the chariot of the sun god definitely true main deulo sanctum tower collapsed over time true
The structural pieces of the temple were bound together using iron dolls. हाँ एपर्यंत जति हमर स्ट्रक्चर अछि ताकू आयरन डोल्स देकी बांधिकी रखा जाय छ नहले सी भी भग्नांश रे परिणत हे जाय चंद्रशेखर मैराथन चलु छी ना तो पिलांकु जति पूरा दिन जाक एंगेज करके रखिबा ता से पीडीएफ गुडा को रिवीजन करिया ता पय टाइम होबनी सेथि लागि एबे 23 तारिख बोध काली आपन राति क्लास अछि 23 नै काली तो राइट आंसर 1 and 2 only sorry 1 2 and 3 तीनटा जाक नेक्स्ट मते कहंतु regarding the economy and land administration under the imperial Gangas consider these statements कोन कहि छी देखो 1 2 and 3 कोन कहिला देखो ना the state conducted systematic land surveys and measured field using a standardized rod known as nala or nala ताकू कहसे मते को गोडा ठीक हो आ सकू जल्दी को आंसर ठीक हो बेटा yes the state conducted systematic land survey and measured fields using a standardized rod known as nala or nala or ताको में नला कहूचे नला हैला पक्का नला हैला नेक्स्ट इन 18 नला सेमती नला देन कहूची cash currency in the form of gold coins called the madhas circulated widely alongside a secondary cell money system based on the cowries तो जो कौड़ी सिस्टम आपनकर थिला मते कहंतु जो कौड़ी सिस्टम थिला एटा आपनकर कमर्शियल इकोनॉमी रो ओडिसा रो पार्ट ना नाही आपन मान जानिथिबे जते बेले कृष्ण जगन्नाथ बलराम आपनकर दही पिउथिले कोन कौड़ी जाचुथिले देबा लागि तो से स्टोरी आपन माने सुनिथिबे माणिकठू कौड़ी माने दही पिउथिले तो ये आपनकर ठीक हे गला देन कहछि कोन foreign maritime trade collapsed during this period due to the total ban on ships sailing out of the ports like कोन चेलितालो ए चेलितालो पोर्ट्स कोठी अछि चेलितालो एंड पालूर एउडा आपनकर एंशिएंट पोर्ट थिला साउदर्न एशिया रे बट एटा कोन कहछि ना ओडिसा मस्टैंड हेतला आपनकर साधो मानक सहित तो ई आपनकर भूल हे गला 1 and 2 हे गला राइट नेक्स्ट कोन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल कोन पचरछि which of the following literary figures and text flourished directly under the patronage of the imperial Ganga rulers कोटा फ्लोरिस्ट करिसंती जयदेव आपनकर करिथिले गीता गोविंद नारायण तीर्थ इकावली हेइची विश्व आपनकर विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ए सबु लेखिचंती ए सबु गाइस आपनकर ईस्टर्न गंगा पीरियड रे फेमस हेइचन ता सहित आपन मानकर जयदेव तो गीता गोविंद जानिथिले किंतु नारायण तीर्थ इकावली कविता लिखिथिले आप माने काव्य लिखिथिले विश्वनाथ कविराज आपनकर साहित्य दर्पण लिखिथिले बोली मने रख नेक्स्ट को तो राइट आंसर आपनकर 1 2 and 3 मते को नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेटमेंट असर्शन टाइप क्वेश्चन गाइस पूर्ण थरे आसी गला मते कहिबो कोन हबो राइट आंसर फर्स्ट कोन कहिला assertion को देखो 1 reason हला 2 and here is the question called bataji select the correct option okay first कहछि the imperial Ganga kings assumed modest administrative titles like rauta and prathama sevak in their official inscription definitely rauta माने कोन जगन्नाथंकर दासंगु राउत कह जाउतला reason ने कोन अछि ना the kings used a strategy of divine delegation portraying the lord jagannath as the absolute state sovereign to gain political legitimacy and the counter internal rebellions definitely जदि निजे को आपण माने निजे भाबु नांती जो माने एबे मंत्री माने आसुचंती से माने कोन करूचंती सबले कहउचंती आमे जनतांकर सेवक सो दैट जनतांक मन रे गोटे सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हबो से मानकु भल दृष्टि रे देखिबे नॉट कि कोनोसी करप्टेड पॉलिटिशियन तो राइट आंसर आपनकर कोन बोथ हे एंड आर ट्रू नेक्स्ट कोन कहछि देखो consider the following statements regarding the rise and rule of Kapilendra Deva the rise and rule of Kapilendra Devanकर टे देखो आसो आउ केते क्वेश्चन अछि पिहु मुंडा जे तो बोलिलाने 100 क्वेश्चंस आनी थिली किंतु 50 क्वेश्चन रे एंड करि देबी बाकी आउ पांचटा क्वेश्चन करिया 50 रे एंड कर देबी बाकी 50 क्वेश्चंस आपनकर आउ किछि करंट अफेयर्स रिलेट करे कि मु तो मानकर नेक्स्ट को गोटे सेशन रे नेसु हला आसो मते को consider the following statements regarding the rise and rule of Kapilendra Deva first कोन कहिछि सेकंड कोन कहिछि सेकंड कोन कहिछि ये आपनकर कोन थर्ड कोन कहिछि पहिला he staged a political group against the weak last Ganga ruler Bhanudev चतुर्थ मन नै मते को ट्रू कपिलेंद्र देव आपनकर भानुदेव चतुर्थ को डिच करिथिले and later तांकर निजर गजपति सूर्यवंशी डायनेस्टी गजपति डायनेस्टी को एस्टैब्लिश्ड करिथिले
Then कहिछि he assumed the grand title of Gajapati गौडेश्वर नवकोटी कर्णाटक ये जो गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्णाटक कौन कलवर्गेश्वर ये टाइटल कहा कपिलेन्द्र देवंकर देन कहिछि he completely abolished the tradition salt tax across he did not touch the primary salt tax तो याको सहित जीवन 1 and 2 हे गला clear yes 10833 10833 कौन 10833 तो 8 थर तुम स्ट्रिंग करना जपिबो आस मते को नेक्स्ट कोन कहिछि हला with reference to King Purushottam Dev and the Kanchi Kaveri expedition consider these statements first कोन कहला number 1 number 2 number 3 first कहला the Kanchi Kaveri narrative is a popular historical legend celebrating Purushottam Deva's southern military campaign against the ruler of Kanchi definitely आपनकर true then कहला during his reign he successfully defended his northern borders by forming a strategic military alliance with the Hussain Shahi dynasty of Bengal. Hussain Shahi dynasty of Bengal माने Bengal सहित खारवेल आपनकर सॉरी पुरुषोत्तम देव आपनकर कोनोसी प्रकार alliance करि नथिले. He authored the famous Sanskrit text अभिनव गीता गोविंद. Yes अभिनव गीता गोविंद के लिखिथिले निजे लिखिथिले प्रतापरुद्र हैला सॉरी पुरुषोत्तम देव हैला नेक्स्ट मा देखो सो राइट आंसर आपनकर कोन 1 and 3 अछि ऑप्शन है तो 1 and 3 म देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची सब ठीक लागुची टुक्का लगेज हो आ सम देखो रिगार्डिंग द रेन ऑफ प्रतापरुद्र देव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कोन कहला ये हैला नंबर 1 ये हैला नंबर 2 ये हैला नंबर 3 फर्स्ट कहला ही एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड मल्टी फ्रंट मिलिटरी इन्वेजन फ्रॉम कृष्णदेवराय और विजयनगर एंड सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ऑफ बेंगल ता आपनकर ये राइट हैला नै मते कोंतु yes or no quick put our right answer 47 question पचरुछि कोन ये राइट हे गला the great saint chaitanya mahaprabhu settled permanently at puri during his reign sparking a massive expansion of the bhakti movement definitely ये भी आपनकर true despite intense military pressure of his borders Prataprudradev Deva successfully expanded the Gajapati Empire down to the Kaveri Delta. तो मतलब देखो कावेरी पर्यंत तो आपन को क्वेश्चन आसुची भारी कोन फ्रॉम far from expanding his territory contracted heavily during this period that means आपनकर कोन से सरेंडर कर देथिले with all his lands south of the Krishna river विजयनगर पर्यंत तो ये आपनकर ड्रॉ हे गला 1 and 2 हे गला राइट नेक्स्ट Madhiko, consider the following statements regarding the structural administrative setups under the Gajapati. The first, second, third. ये वाला कौन third. तो madhiko first को जो the empire was organized into primary administrative province known as Dandapatas and Rajyas. तो हाँ madhiko ना Dandapatas and Rajyas सहित हमारा relation अच्छी. दंडपतस आपनकर कोन राज्य हैला दंडपतस हैला माने सेम थिंग दिस वर गवर्नड बाय द एम्परर कोन ना परीक्षास मानक द्वारा तो ये हैला राइट आंसर देन पचारि छी द मिलिटरी वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए मैसिव इन्फैंट्री एंड वार एलिफेंट कॉर्प्स व्हिच गेव राइज टू अरिस्टोक्रेटिक मिलिटरी टाइटल्स लाइक नायक पेंट्रा एंड प्रधानी तो जो नायक पेंट्रा एंड प्रधानी ये भी आपनकर कोन ट्रू हे गला पूर्ण पतला द गजपति रिप्लेस्ड ऑल ट्रेडिशनल लैंड ग्रांट्स विद अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कैश पेमेंट्स ऑफ द प्रोविंशियल ना लैंड ग्रांट सबुतिक कोन ये रिप्लेस करी नथि रॉन्ग हे गला नेक्स्ट कोन पचार छी देखो कहिची विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर ड्यूरिंग कहार ना ड्यूरिंग द गजपति पीरियड पचार छी 1 2 3 2 and 3 yes मते को पहिला शारदा दास द पायनियर ऑफ क्लासिकल ओडिया लिटरेचर कंपोज्ड द ओडिया महाभारत अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कपिलेन्द्र देव कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पीरियड आपनकर शाला महाभारत आदि कवि स्टार्ट हेतिला आपनकर काहाटो ना कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पीरियड ये ठीक अछि द पंचसखा 5 ग्रुप्स ऑफ पोएट्स फ्लोरिस्ट हेतिला तांको पीरियड रे कोन अच्युत अनंत जसवंत जगन्नाथ बलराम ये भी ठीक अछि द गजपति किंग बैंड द यूज ऑफ संस्कृत बैन काइन करिवे संस्कृत तो 1 and 2 हेला राइट क्लियर नेक्स्ट मध्ये को ऑन द लास्ट क्वेश्चन which of the following works are correctly matched with their respective authors from the Gajapati era the Gajapati सहित आपण माने कंसीडर करते फर्स्ट कहला शारदा दास को चंडी पुराण डेफिनेटली शारदा दास आपण को चंडी पुराण लिखि दिले हन नै मते को शारदा दास
लेट द आपनकर कोन बिलंका रामायण जोटा को हम चंडी पुराण एंड आपनकर ता सहित बिलंका रामायण लिखिथिले ता सहित आपनकर महाभारत देन बलराम दास आपनकर जगमोहन रामायण हाँ ना मते को बलराम दास आपनकर जगमोहन रामायण लिखिथिले नहीं जगमोहन रामायण जोटा आपनकर दांडी रामायण तो सेटा हाँ ना मते को अरे बलराम दास आपनकर दांडी रामायण जोटा दांडी राम एटार आपनको कोन पचार चंडी पुराण ना दांडी रामायण हाँ जगमोहन रामायण जोटा दांडी राम आपनकर दांडी रामायण मध्ये सेटा एटा भी मन रखो ये भी ठीक जगन्नाथ दास आपनकर ओडिया भागवत ये भी ठीक तो जगमोहन रामायण जोटा आपनकर दांडी रामायण भी सेटा मन रखो कंफ्यूज हबो ना ओके हाँ हो तो डेफिनेटली गाइस एतिकी पर्यंत आपण मानकर क्लासेस थिला पेशेंस नाही आगु को नेबा लागी तो देखा अगेन आ गोटे नेक्स्ट सेशन रे तम मानक सहित जो थ्री की रेस्ट 50 क्वेश्चंस आनी थिली ताको आपण मानकर कंप्लीट मु करै थि हैला थैंक यू सो मच गाइस हैव ए गुड नाइट चेक करिवो टिके थोड़ा पीडीएफ देली एटा को कंप्लीट करिवो हैला thank you so much have a good night take care of yourself but first of all do prioritize your parents this will be your first priority no one thank you so much